they have strats dedicated on this map. They have a great feel of it, and one of the reasons why they're so good on it is because they're able to bounce off of each other so much easier. It's just like later on when you look into the game, once especially on the defensive side of 𝘼𝘼𝑖𝑟𝑖𝑎, once you take a look at the defensive side of 𝘼𝘼𝑖𝑟𝑖𝑎, you will notice that their zoning is almost always flawless. They know how far away that they need to be from each other to make effective trades. They know how they know their spacing really well. This is something that they have ran drills upon drills upon drills on just to get it perfectly every single time. And you're gonna see it like a little bit later on. Breaking that down, especially if you're not ready with set strats for it, might be the case for Lethality Estelle. It's impossible. भाई मेरा लंच आने वाला है बस 2-3 मिनट में लंच करके आता हूँ. Hit the nail on the head here. It's just you can see how they play with each other, right? They sometimes it's a double peek through an angle, just try to get one pick off, even from the defending side, and then immediately retreating just to win the numbers game. Slowly doing that, or maybe double utility usage. देखा मफिन का एस क्लैश देखा मैंने जो उसने विंडो पे one flash into someone विंडो पे मारा ना एक बंदे को उसने देखा. ठीक है सक्षम. हाय लॉन्डे व्हाट्सअप. भाई राखा को देखा नहीं? राखा ने किया क्या? वो आयरन टू डायमंड इन वन स्ट्रीम उसने क्या बोला था? और यूफो क्या हालचाल? सब बढ़िया. सौरभ भाई आपके क्या हालचाल है? मेरा भी लंच आ रहा है. मेरा आ रहा है चिकन टिक्का मसाला विद गार्लिक नान. लेकिन ये मेरे को डिलीवरी देने से पहले दूर कहीं जा रहे हैं, पता नहीं क्यों. डिलीवरिंग ऑर्डर नियर बाय, उसके बाद हमारे यहाँ आ रहे हैं. चलो तब तक हूँ मैं यहाँ पे. और गंदे प्लेयर कैसा है? प्रोविजन आईने में देख के बात मत कर. और भाई यूफो हेलो प्रतीक. VLT वाइट का मैच, VLT वाइट का मैच वॉच पार्टी कर रहा है क्या? VLT वाइट वो क्या होता है? नाइट राइडर का एज देखा क्या मस्त था. नाइट राइडर का है मफिन लूप है. हेलो अथर्व. अभी चल रहा है स्ट्रीम? हाँ चल रही है. लेट्स लंच टुगेदर. आई विश आई कुड ईट हियर एंड यू नो वॉच इट, बट मेरे को नीचे जाके खाना होगा तो मैं 2 मिनट में आ जाऊंगा. मैंने KFC मंगवाया. सही है. आवाज टेंस कर फिर बात कर. आवाज नहीं आ रही. ठीक है तेज कर. आवाज नहीं आ रही मेरी, बराबर आ रही है. हेलो अभी. हेलो थैनोस. मैं तो आज लंच में रेस्टोरेंट जाऊंगा. ये सही है. VLT वाइट इज इक्वल्स टू एस्टेरिया, ऐसा क्या? कल के मैच का नहीं देखा रे. कल का मैच मैंने राखा की स्ट्रीम अभी तक चल रही है 18+ आवर्स. कहाँ पे कर रहा है? लोको पे या यूट्यूब पे कर रहा है? वो कहाँ है? And for them to run KO plus Sky here, they really know what they're doing because those two agents ओ भाई competitive. रैंक क्या हुआ राका का ये बताओ. You have to have set timings. The window in which the flash pops and then you having to go in is really small, and they need to be really ready for that. And Lethality Estelle, I think they'll be seeing the light. Wait, अभी तक वो सिल्वर 1 पहुंचा है. Let's go ahead and dive straight into it. I think we're going to agent selection, excuse me. See who picks up this map. थोड़ा टफ है ये करना, उतना आसान भी नहीं है. Correct on this one. Yeah, you know I honestly think that the KO Silver is 2 fantastic on split. डायमंड बनने में टाइम लगेगा. This is probably the only map. वन साइडेड मार के कैरी करोगे तो हो जाता है. वैसे LC की वॉच पार्टी करेगा देखते नहीं होगा रे. ये मफिन गॉड है क्या खेली? अरे बाबा रे बाबा इंसेंट मारा रे उसने. हेलो हेलो double sentinel. Yeah. हेलो हाँ बोलिए भैया. Reach, I haven't really seen Lethality Estelle on split, so it's really hard to say if it's going to be as effective as it might sound. But Breach is I would say, easier of the flash initiators to use. Because using the Sky and the KO require a little bit of coordination. The Sky especially, right? Like when you're using the Hawk and flashing a specific angle, your teammates need to know where you're flashing. And here's the divide. You see it in the agent select already. There's the Cosmic Divide was the one that ended the previous map, and we see a very big divide in how these two teams are actually drafting their agents. One thing that's really good on Breach for these executes, they know when to play fast. They know how to get into the site. They know how to play the post plan. यार इंटरनेट एक्सपायर हो गया था. I think that for this round number 3, we're gonna see them play slow. अरे they like doing this where they change the tempo so that they recharge किया. Guessing. Right. One reason why Muffin Luke दिमाग से निकल गया था इंटरनेट वाला चीज. इस टाइम पे एक्सपायर होता है वो. He wants to have that ultimate up as soon as possible. They did nerf it a little bit. It's a little bit more expensive now, but that just even makes you want to go and play a little bit more aggressive because the changes to Sky have been
not actually that back. bad. Yes, Like, you can back, play back, aggressive back. Sky. You can pop flash behind yourself. You can do a bunch of things here. But nice gravity well, perfectly पटाना नहीं placed चाहिए right there to catch जब off उसके the member of fooling them in में Hysteria. फंस जाओ एक बार तो Swing out from 𝘼𝘽𝙊𝙊, back, just back, unable back, to find boys, another back. one. But they will be flushing them out right around this corner. They have to try. They will be spraying down through यार it. इंटरनेट Slow up, एक्सपायर हो गया follow था up, मेरा but no kills to be found. बात नहीं Only the ठीक है one that Nano Swarm It is gets fake. with Lucille's skills. And Asterion, they're just getting forced क्वालिटी back. यही है क्या बेस्ट As all of the utility just forces them all वन the देखा way देखा back रे towards their own spawn. भाई स्कार that was टोल्ड great me utility कि आपने usage, उसे the बोला combination कि of the डोंट breach गो plus फॉर Killjoy. Eupho They were able to flush them एक out. They सुपर even got a लाइट kill यस off of मैंने Nano उसको Swarm, बोला but नहीं जाने के लिए Muffin सुपर Loop लाइट is के gonna get लिए one kill here, and this is where it starts to मैं get रोकूंगा dicey, right? किसी It's को still भी a बहुत 3v4. डेलिकेट माउस है They बहुत might not जल्दी have खराब superior होता guns है here, but they can मिलता start भी नहीं picking है up और your बहुत guns. Muffin Loop अननेसेसरीली in the अभी Phantom is एक्सपेंसिव है going to be उससे ज़्यादा pretty lethal. बहुत तो वायरलेस बहुत ज़्यादा स्टडी है और ठीक है Yeah, let's see if they can actually get into this side. They're trying hard, but here's the breach discouraging that. But Refresh, Shrey yes, gets the refresh, headshot onto 𝘼𝘽𝙊𝙊. Muffin मैं Loop एक्सीडेंट खा down के आऊँ क्या to गाइस 21 HP. They're going to go down to ropes right now, but are they ready for Lucille? खा के आता Lucille हूँ रे gets Shrey, but Eupho he's still too incoming alive. coach They can ठीक get है Lucille कैंडल if they can. Oh my They might be God. able to get the Eupho plan. But wireless ही Lucille लेने gets का Muffin Loop. And Casper takes her down though. Best She ever. can still get a Phantom. 1v2 ऊपर against कुछ Casper in a clutch situation, but it's only 69 HP left remaining. She gets भाई मैंने pulled in. गलती से Does ना not कल get की a kill स्ट्रीम onto डिलीट कर दी Villarino, who कितना shuts बड़ा her एफ down. किया है मैंने And भाई Vitality is still इतना बड़ा एफ escape किया है with 2 एक players अनलिस्टेड left स्ट्रीम alive. लिस्ट की But, you know, we गलती से talked दोनों about this डिलीट over कर and दी over कल again. की In a और आज buy की round, you want Right. to keep as ये much वाला बनाया क्या as many दिमाग guns कहाँ as चला you गया can, मेरा because भगवान you're जाने And going like in- LDSLs, they've never done it. They've हाँ never done लंच it. करके Look, आता हूँ लंच there's a आने तो Bucky right now in लंच आ जाए Dumpling बस and 2 बंदा है Spectres. किधर In इसको this लोकेशन दिया हुआ entire है फिर भी series, I don't think I've seen a clean anti-eco or a anti-bonus round from No, Vitality itself. not at all. And every single time they lose too many players, and it just shows how, first of all, how good Asteria's strats are in terms of making things expensive. That run towards ropes, it's not to win the round. It's to catch people off guard and to get their guns, and it works perfectly. Yeah, and getting 3 is just really expensive because typically when you go into round number 4, you'd expect to be even. on टिफिन तो हम guns, नहीं right? रहे टिफिन नहीं But आया You know, you lose a few players and it starts चिकन to टिक्का मसाला not और नान be even at मंगाए all. खाने It's not के even लिए close to धन्यवाद even right now because there's only 2 rifles on the side of Vitality Estelle, even आ though they रहा won है the बंदा previous round. A Bucky. A Bucky. A Yeah. nerf भाई पहला Bucky, वाला by मैप the लेकिन way. This इंसेन is the खेला था इन Bucky लोगों ने of old, right? Like, आज हम लोग not का a फाइनल्स Bucky है like ना you can use it on a full buy छह round. बजे It will still be fine. This is a different Bucky entirely. and Yeah. it's- I mean, I would actually have preferred a judge if you could have afforded it. 'cause भाई the judge ये is still good. ट्विच I का ये mean, लैग होता है क्या इन लोगों का obviously स्ट्रीम Bucky makes it work. So कल भी देख रहा था बफर हो रहा था थोड़ा But थोड़ा 𝘼𝘽𝙊 picks off Mayo 16k with the Spectre. Really nice Spectre there, but शॉट है Casper is there to कैस्पर punish पहला the गेम भी बहुत greedy अच्छा खेली breach, trying to go for that gun. I उसके think बाद that was a मुफिन bit ने too शो अप greedy. किया They haven't cleared जैसे मैप निकाल any लिया उन corner at लोगों all, ने and he just ran straight for the gun. With 2 tunnel स्कोर vision. क्या है yes. ऊपर में लिखा हुआ Yeah. है स्कोर Hearth does get a pickup though, so it is a 3v3 Level right 2 now. They चल do रहा है। have पहला मैप lockdown, एस्ट्रिया so जीती they would probably try to 30 play seconds left. retake on towards this site. Totally viable. But even more viable now that BL has managed to find a pickup. They cannot find where he is. नहीं 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 He नहीं is, नहीं excuse me, BL. Gravity well, perfectly timed. We'll try to swing on the top of it. Gives up her position, but it doesn't matter. It's bought a lot of time for that rotation to come in. There still is a lurk play coming in right here, all the way from mid. But there is no time बंदी for किधर that है pickup इसकी? to come in, especially with that pain shell to slow down the pace. Spike has been What dropped, and disconnect? there's just no more time. Absolutely none. Shrey has to run तो away. And it's perfectly Observer से played by नहीं हो रहा था। Vitality still on a lesser buy. Yeah, that was completely unexpected and actually a pleasant करूंगा surprise. रे They फिनम needed नहीं to मौका hold मिला lockdown, रे though. They मैं सोचा really थोड़ा wanted वॉच to पार्टी string करता हूँ 2 फिर rounds आज together. जाने दूंगा बाद Talked में about आराम this, से right? चिल करके करें When will they string 2 हेलो rounds वेलकम टू together? द And स्ट्रीम टेक है ना आज couldn't, 6 बजे couldn't have come at a better time, right? This is कौन जीता पहला वाला Asteria's मैच map pick, and when you एस्ट्रिया start है stringing the एस्ट्रिया rounds together, this is where we can finally build your economy. Now Exclamation we're events. actually seeing 5 rifles from them, and if they can keep ऑफिशियल this up, ब्रॉडकास्ट ही they लैग हो can रहा है give, रे like they can give Asteria a run for that. कोर्स भी कम कर दिया ना तो भी You know, दे आर ओनली Split लैगिंग has been more and more attacking sided. क्या as I यार think एफएसएल के लिए इन this is लोग के not पास so much बजट नहीं है क्या maybe अच्छे से in प्रोडक्शन the करने के लिए region, but at the very least in SEA. पैसे की we तो are कमी नहीं seeing है Actually, you know what? The last time I did VCTA, all of the split maps were attacking sided wins. So this might be sort of attacking sided wins. So this might be sort of a continuation of that here, as Vitality still they have managed to find a couple of rounds that are very much definitive. इन लोग के and एंड से लैग हो good रहा है रे indications, good indicators of success, I think. हाँ उनका इशू है पता है However, रे It's all ब्रेक gonna डाउन दे matter अपना unto this मतलब one because Lucille does manage to अपना find मतलब that Zerk pick off onto Shrey right there. That's the lurker yet again gone. The Viper's controller out of भाई इन लोग
लेकिन बहुत sophisticated game खेले.
able to mow them down as well. So Vitality Estelle, they are having a really good read up against Asteria right now. They get onto site, sure. Can they find the kills? Doesn't look like it, Asteria, but BL, she definitely does. And finally, I think after so long, they finally managed to get a clean anti-eco. Yeah, this is what I mean. They finally, I mean, this is probably the first time we've seen them have enough to have 5 guns right now and have enough to buy the next round should they lose this round. This is actually really interesting because even though 13-6 doesn't seem like a stomp, right? I mean, it's pretty one-sided, but typically when you see the score, it's not really a stomp, but it felt like a stomp in Haven because Vitality is still never were able to buy 2 rounds in a row. It does feel like a different game entirely. This is a good sign for Vitality Estelle, but Asteria, they are struggling on this attacking side though, and I do feel like it has to be a little bit, it has to do a little bit with the decisiveness of it. They haven't really gotten a good feel of Vitality Estelle's defense, and so they're sort of bouncing back and forth between sides, trying to figure out what really works, rather than finding not much success in any side. But once they sniff them out, Asteria is one of those teams that are really good at learning how to adjust in the middle of the game. I wouldn't be surprised to see Asteria start stringing rounds together back and forth, like completely, maybe 3 or 4 rounds in a row later on in the half, once they figure out how to approach this defensive side, this attacking side, excuse me. Yeah, they're definitely checking. Look at them. They're playing really slow right now. They're trying to study the defenses of Vitality Estelle before fully committing because they've been punished multiple times for just being too aggressive. But Hearth, quick on the trigger, gets immediately traded by 𝘼𝙬. And that's some power right there. Straight headshot onto the Raze. Now it's down to a 4v4. Trying to get into A side, but they might just change directions here. Alright, they're going to A instead. That's going to be a full commit. Yeah. They know where the Killjoy is. Possibly they check the corner, but Casper does not get the shot off. There's the ultimate coming out, discouraging Asteria from getting more kills. 𝘼𝘽𝙊 gets a kill as well. He uses the flashes to her advantage. Beautiful. Very great play by this Breach, and Lucille is going to finish it off. And that's exactly why Breach is great on Split. That ultimate covers the whole site. Absolutely perfect usage of it. Even though it knocks up her teammate, fine. So be it. I'll be Make there sure to you swing cover out. her. Yeah, I'll knock you up, but at the same time, I've got you covered. Wait. That sounds like something else entirely. But yeah, if you ult your teammate, you better be responsible for it. And damn sure 𝘼𝘽𝙊 was ready for it. That's for sure. And Hearth with the operator here right now. Asteria need to save yet again. Oh, there's the op shot. Missing because great jiggle peek, great intuition there from Asteria. Like probably feeling there might be an operator there. Not sure how much they can get from this eco round, but they want to make it expensive. Yeah, so right now 𝘼𝘽𝙊 gets flashed. Muffinloop gets a headshot onto Dumpling though. That's a quick trade. Gets another one onto 𝘼𝘽𝙊 thanks to the paint shots, but Hearth actually gets Casper. It's down to 3v3, but there are guns now on Asteria's side, so this is going to be a bit scary, but 𝘼𝘽𝙊 takes 𝘼𝙬 down. There's 2 guns on Asteria right now, so it's still going to be scary if they can get the kills here. Hearth still has the operator though. Gets 𝘼𝑽𝑗𝑢 16k. It's now down to Muffinloop, who has been on a tear the previous map, but can't seem to get going that much here on this next map. There's still a Phantom in her hands though, so she doesn't have Spike. I think that's the biggest problem here right now. And I think if she can isolate these kills 1v1v1 instead of having to peek 2 at the same time, I think she can get this. But Hearth is quick on the trigger right now. I think Hearth especially, she was playing the Jett in the previous map. I think she's been playing extremely well. That operator is deadly in her hands, and they need to be ready to take that away from her. And great timeout here by Asteria. I think that not many teams in FSL have actually used a timeout early enough. I feel like all teams tend to use the timeout when it's a bit too late. And right now, Asteria, they're probably talking to each other. They're probably trying to see how they can change the pace, because right now, Vitality Estelle feel like they're in control of the game. And Asteria, we'll see if they can find something to break the defenses here. Hello, welcome back. But
I think we're all good now. Timeout. This is a tactical timeout, guys, and so Yes. they're going to be taking a little bit of a breather, trying to think what's going wrong here because Asteria, they are just not putting the pieces together. They are struggling to address the defensive side of Vitality Estella, which is somehow looking at the moment vibrant and very much responsive. Currently, it's looking like they have all the bases covered. When somebody's in trouble, there comes the flashback, there comes the flash, there comes the ultimate right there from 𝘼𝘽𝙊𝙏. You know, every single time that there's someone in need of help, the response is ready, and they're not afraid to leave someone on site all alone to defend it, like DL earlier on has been enough to slow down the pace. They know that Asteria actually likes to go for those late lurks as well, and so they've been watching out for it. So it's a fantastic showing right now from Vitality. Yeah, and Asteria, I think I was mentioning that other teams seem to call a timeout too late. They tend to typically wait until it's a bit too late to call a timeout. And Asteria, I feel like this is a great time to call a timeout, right? They tried to go for they now have the buys basically, and now they can go for a reversal here, a change in pace. And Asteria still struggling to get into the side here. Now trying to go for a 5-man rush onto B. Oh. The showstopper, good for a kill onto 𝘼𝘽𝙊𝙏. Now, counter showstopper does kill 𝘼𝘽𝙊 as well, and that Viper Spit is gonna go down as fast as it came up. 𝘼𝘽 16k with the judge though, gets the kill. It's now down to a 3v3. 𝘼𝘽𝙊𝙏 gets 𝘼𝘽𝙊𝙏, and I'm not sure if they can plant a spike at this point, but Casper is gonna open things up for Asteria. 3v2 right now, and Vitality Estelle, they're a bit choked out right now. They are. They do get the spike down here, Asteria, but Vitality Estelle, it didn't really go their way. I thought once that the showstopper came in to deny the Viper Spit, that could have been their round, but a shot like that from Hearth bring them back here. 𝘼𝘽 is able to pull it back with a judge in tow. 2v2 still, retaking with the off, not the easiest thing in the world, and so they're going to have to try really hard, and she's going to have to dig really deep. Could elect to go ahead and try for the save, but they've got money, and they've got money to lose, so they're going to go ahead and try for now, as time is ticking away here. They're just going to try to get closer and closer, but Hearth decides it's not worth it at this point. Turns around, turns tail, backs off, and just decides to save the op itself. And I think 𝘼𝘽 probably switched to rifle there to get... Oh. Made it out a bit too late for that. Unfortunately, doesn't save the rifle nor the judge. So it's going to be one rifle saved for Asteria, but at least they got the round. That timeout, I think, I'd say it's pretty effective. And right now, Asteria, they still can buy 4 out of 5 rifles and a Spectre on 𝘼𝘽𝙊, so I think they're going to be okay. Britsy's sitting at 0-7 though, so definitely something a little bit amiss. I mean, when we talk about Asteria, Britsy never really sort of the top fragger, never really sort of the insane player that you look at for the kills, but still 0-7 at 9 rounds in, it's a little bit concerning now. She has to start hitting her shots, has to start contributing a little bit more. Just try to get on the same level as everybody else, because you know, when one person is lagging behind on split, it's very easily punishable. You find where that player is, you isolate them, and you try to punish them as you can. Yeah, you tend to hunt for those matchups, and if Britzy needs to get going. So she's playing pretty well from a utility standpoint though. She's using it properly. She's really supporting her team. But Casper and 𝘼𝘽 16k say that, hey, we're here to back up your firepower. She does go in first, Britzy. She was the first one down. And Lucille is gonna try to go for Heaven Controller. Muffin Loop just sees that. They're electing to just play on site. Muffin Loop gets taken down by Dumpling though. Suppression Blade comes out. Lucille evens things out. Now it's down to a 3v3. But 𝘼𝘽𝙊 with the flank shreds him down with a Spectre. Is able to upgrade the gun. Dumpling can't even find the rest, but Dumpling takes 𝘼𝘽𝙊 down. Now should be able to rest. She can't even things out here. Yeah. The rest onto Lucille. Could go for this 2v2 right now, but won't check that corner. And up from above. A little bit of a disconnect on that one. 𝘼𝘽 still lands a nice double. That's a triple right there. Vitality still showing now signs of weakness after that pause by Asteria. Yep, that I would say Asteria's pause has been the most effective tactical timeout that I've seen so far. Like they had a plan, they executed it, they were able to reset their mental here. And look at 𝘼𝘽's aim here. I like how 𝘼𝘽's aim is. It's just, the first one was crosshair placement. The second one was a small flick, and her aim just looks very, very snappy, and it's such amazing things to see. Yeah, 𝘼𝘽 already did her job just by the fact that 𝘼𝘽 got 1. I mean, yep. Even if she just got 1 and brought it to a 1v1, that's already massive for her team. So now they're working their way towards this heaven site, Asteria, and they have managed to find
some success. Now, can they recreate it once more and force a reset onto the economy of 𝘼𝘽𝙊𝙐𝙏? Looks like 𝘼𝘽𝙊𝙐𝙏 finally gets her first kill in the game, as she finds that opening onto the Sage. 𝘼𝘽𝙊𝙐𝙏 right there with a follow-up, and Asteria suddenly looking like they're firing on all cylinders here as the spike does go down in a 3v4. The ultimate is available for Lucille. Could actually deploy it. She gets a kill onto 𝘼𝘍𝙐𝙐 right now, and 𝘼𝘍𝙐𝙐, nice adjustment onto 𝘼𝘍𝙐𝙐, and that is going to be a 2v3 here. No one's committing. Not going to be committing that ultimate just yet. Finally will do so, but it could be too little too late as the HP and the time is running very low. Yeah, and there's small pockets on the A side still where they can just chill a little bit and stay. And it's all down to Hearth with the operator here. It actually makes it she's detained. 1-on-1 right now. Yeah, she's detained too. So I don't know if Hearth... I don't think she has the time to go for the defuse here, but she's at least going to get the kill. I think she does. Oh, if she went for the defuse instead, she might have won the round. Yep. Oh, dude. Oh, man. She spent too long. I think she would have had the round if she went straight for the defuse. Yeah, the chain is enough. More than enough. Oh, man. An amazing play by Hearth, excuse me, but just a little bit of just the wrong decision at the end. Can't blame her for it. She had to make a choice, but still. Off the top of your head, do you actually know how long the lockdown holds you for? Yeah, lockdown, killjoy, duration. I know it. I know it. Is it an it's 8 seconds. Yeah. Yeah, it's exactly enough for a defuse. Yeah. Casper creeping up here. Hearth still with an operator. And how far was Hearth? Right. I mean, how far was really far. Meow. How far was Meow? Meow was all the way buried in. If she went straight for the defuse, that would have been a defuse. Exactly. Even if she was right beside her on site, actually, that would have been a defuse. That is true, because she landed as soon as the lockdown hit and the detain came out. And Casper might be able to sneak up to Hearth here. She probably didn't see her creep up. Villarino gets 𝘼𝘍𝙐𝙐 though. Casper here finally punishing Hearth, but now it's down to 2v for 𝘼𝘍𝑍. Makes things a bit easier for them. 2v3 right now. There's the stun coming out from the bridge, but 𝘼𝘍𝑍 is already in heaven. And now the spike is going to be on site. They're going to get the plant. A little bit of a fake first. Trying to clear corners here. The flash coming out. They know that there's people in heaven. 𝘼𝘍𝑍 in the exact same spot that 𝘼�16k was in. Casper is actually creeping up to A. 𝘼𝘍𝑍 is good for 1. Now it's down to a 2v2. Oh, they're in for a loop here. It's all the way onto A. Asteria, the masters of debating. And now the spike is actually going down on A, and they have no idea. They have to move right now, but they might just get punished. Yeah, the Cosmic Divide. What are they going to do with it? They can deploy it there. It can actually really help them on this retake right now. Dumpling, alongside her teammate, BL, they're going to try to get close. And that should be the Cosmic Divide already deployed here as they work their way onto the side. They're going to soon find out that there's nobody on the actual site itself. So the spike might actually be diffusable, but Casper looking to deny map control like this is looking very, very difficult as Hysteria wipe it up. And yet again, they get another round in a row. So many in a row right now. That, like you said, man, that tactical pause was everything. Yeah, but you mentioned also that they look like they're about to string a few rounds in a row. And they did. They were down 5-2. And now they're 5-6. They're suddenly in the upper hand after one tactical timeout. And look at 𝘼𝘍𝑍𝑐𝑖ty. Look at their economy. 4 Spectres. And Hearth with that Phantom can't even buy full armor. It's just... It looks to be a 7-5 half for Asteria off of a single timeout. Yeah, just, you know, allowing a team to breathe is already massive. I mean, just the fact... There are some times, you know, as a team, when, like, if I'm coaching a team, I'm just telling them, hey, you use this timeout, don't even talk. You just breathe. Play your game, and more often than not, it's enough. Simply because a lot of it is the game, the pressure. It takes you out of this mentality where it takes you out of the zone, and it's just so important to be able to get back into the zone and just to take those 30 seconds to just recenter yourself. Sometimes you really put yourself in the mental hole, right? Like you keep trying to find the frags, you try too hard to find the frags that you forget how to play, and you forget your foundations, basically. And now I think looking at Asteria, their confidence is back, and here is another, might be another bait play yet again. There's people on A, and now they actually think that Asteria are baiting an A play. It's a double fake, and it's beautifully so.
There's only 2 players, however, on the site. Oh, sorry, excuse me, 3, and they will have to survive. That's the Seekers coming out. I don't think it's going to be close enough to land on anybody, but it's going to at least allow information for that Sky to be able to get information that nobody's there and it's completely clear. Cosmic Divide is also going to be used up as well, just to help them along a little bit more. Casper does get the kill onto Lucille. Now in the Viper Spit they go. Can they find the kills necessary? Looks like 𝘼𝙬 is going to be shredding things up onto Hearth here. That's going to be a trade up. Casper goes down, but the decay is coming in. The lineup doesn't work, actually. It doesn't win. It doesn't work out in their favor. But it doesn't matter because 𝘼𝙬 just absolutely destroys them, and they end up winning so many rounds in a row. They managed to find a 7-5. Yeah, that's 5 rounds in a row. Like, 𝘼𝘽𝑉 still also got 5 rounds in a row of their own, but then a timeout was called, and then they put a stop to that. And I can see Hearth starting to lose that confidence that she had in their 5-round streak. You could see the way they play. They start becoming less aggressive, you know? Even though it's just a little bit, you start becoming less aggressive. You start becoming less confident. You start just being a little bit afraid. And that mental difference, that mental edge, can just be what 𝘼𝘽 needed. Yeah, that little tiny difference is actually a lot. I mean, there's a lot of rounds where a moment's hesitation will actually cost you. And obviously I've seen this firsthand where, like, if you hesitate 1 second, that's enough for someone to throw out a piece of utility, someone to make a rotation. And it could be the difference between winning a round or not. And we're seeing a lot of hesitation now from the side of 𝘼𝘽𝑉. It feels like they've been read quite a lot by 𝘼𝑉. But now the ball is in their court because they are on the attacking side. It is their time to make the plays, make their moves if they can. But look at this aggressive B main push. Casper, 𝘼𝘼, they get B main control completely. They know a hit's coming from heaven. They decide to push towards B main. They win the fight. They get the spike. Yeah, it's a really smart play. And look at Casper with another headshot yet again on Hearth. And this spike is stuck there. Villarino is going to get 𝘼𝑉16k, who wasn't watching her back, but now there's 2 other players in heaven. Muffin Loop is good for the trade. Villarino has to take Muffin Loop down. There's a flash coming out, caught for the Hawk out, but Muffin Loop, 𝘼𝘼 is actually going to get the kill, her second already. How is he alive? There's just no way after getting gravity weld like that. And she was holding her flash too. Exactly, they're just, how? But she somehow survives, alright. That's completely illegal, but you know, that's a tilter if I've ever seen one. And I'm just gonna say, it's really smart of 𝘼𝘼 to push forward. Like you mentioned, that's a mid-round adjustment right there. They're pushing heaven. Let's push main and punish them. They take the kill, they get the spike, and immediately secures the round for 𝘼𝘼. That's a mid-round quick snap decision, no hesitation right there, because they just hesitated ever so slightly. They could have gotten picked off from heaven already. They could have gotten pincered. And look, 5 agents suppressed with 1 suppression blade there. They know where 𝘼𝘽𝑉 yeah, guys. Darshan and Poison, thank you for becoming, nothing they can do about renewing it. the membership. No map control. They have no idea that 𝘼𝘽𝑉 इतना जल्दी lunch किया ना मैंने, खाना अटक गया मेरे actually, they're gonna leave that Sky there to wait it out. भाई क्या खेल रहे हैं ये लोग? मजेदार. Wait in this corner. They're not ये मैं even निकाल लिया ना तो बहुत एडवांटेज होगा. अरे नाइस रे. right now. Vulnerable थे सब. Oh. टाइम पे वॉल खोला. Okay, fade away. Fade away. कैमरा हटा. Classic right click. कैमरा हटा मतलब? They're off. कहाँ से हटाऊं? That's a classic if I've ever seen one. But Oh, I like this angle by 𝘼𝘼. She goes into the position her team last died in, so they're probably not gonna check it, and it actually works. इधर कर That's the देता हूँ kill. कैमरा. And Dumpling's the only one left standing here with. I mean, sure, she's healing up, but still, they know ठीक है? exactly where she is. क्विक खा के आया मैं. आराम. They spotted आराम her, से right? करता नहीं. Yeah, they definitely know she's. मैं आपसे कैमरा हटा दिया रे. Wall bang. Straight to the head of Dumpling. Nothing she हटा could दिया do there. मैं आपके नीचे कर दिया. ठीक है अभी? She just expected. Maybe was Hello hoping that Badir, what's up? hopefully no one checks my corner here. तू Badir. But like you mentioned, 𝘼𝘼. Hello Brew, tucking herself welcome, into the exact welcome. same Thank you corner for that becoming Casper a was in. lieutenant. All people tend to not check their corners twice, and I think that's extremely smart. Yo, And Aki. I'd really like to point this out Show bad show. again. What's up, Aki? 𝘼𝘼 are playing with a purpose. Every single move they're making has a purpose behind it, and they're playing extremely deliberately to the point that 𝘼𝘽𝑉 still मेरी एलर्जी. can't find any openings. Yeah. I think case in point of that would have been that response towards that B heaven. भाई Like, ये they have कायो 2 खेल रहे players हैं. on B site, and they know they're vulnerable from heaven. Instead, they give up the vulnerability and then they push towards B main and they turn it into an advantage. उसमें नहीं है, मेमोरी कार्ड ले लेना. So 𝘼𝘼𝑉 again playing एक तो उसके अंदर like you said, निकाल ले. cerebrally
and just very decisively knowing what to do and with purpose. Now, they're holding on to that site. Muffin Loop only has 26 HP. Won't be able to do anything with it. Somehow they've still found a 3v3, and this is still already an expensive round. Spike has been collected, but Richie will punish her for that collection, actually. 3v2 now as a stereo once more. If a stereo wins this round, I'm calling pretty much GG on this it's done. game. Right, like this is their bonus round, and clear bhi kar de dono right now. Like uda de pura jo bhi delete well, they take one down, but Shrey immediately trades Villarino is alone 1v2 post-plan situation, but it's going to be really difficult as an Astra here, and Casper is going to take her down with Spectre, and that's it. That's कितना lag क्या करे homeopathic like already. Yeah, that was their buy round. It's a bonus round. We're most likely already trying 11-5. कोलकाता में next meetup पता नहीं देखते हैं और अक्की क्या हाल है यो राहुल भाई what's up might force on top of this. No, they are not both Indian teams रे no, they thought about it, but I guess एक vitality है ये कहाँ की टीम है मेरे ख्याल से पिंक देख के तो लग रहा है साउथ ईस्ट एशिया की टीम है ये वाइल्ड कार्ड का मैच चल रहा है लोअर ब्रैकेट फाइनल्स ये अगर एस्ट्रा जीती तो ग्रैंड फाइनल्स में आ जाएगी really just bite the bullet on this one, take the round और ये बेस्ट ऑफ 5 है इसमें से एक मैच जीत चुका है एस्ट्रा again this is not their map pick, इंडियन so लाइनअप है probably I mean this is an expected result, you know. 100 पिंग डिफ पर भी हार रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है बेटर प्लेयर हेलो केविन हेलो कैमरा 13-6 yeah मैं सुना है आज तू जेट खेलने वाला है सनी के जगह might not even get that to that might not even get to the 6th yeah ठीक है काली she plays an aggressive position ऐसे विन दे देता है ना डिक्लेयर कर देता है if I die here VLT is walking over मेरे को क्यों उतार रहे हो टीम में vitality out. Look, they're trying to go for cover right now. There's the one way. मैं कभी-कभी आता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस खेलने के लिए आता हूँ मैं कॉन्ट्लेट के 2 मैचेस खेले मैंने जब 2-3 प्लेयर नहीं थे या 4 प्लेयर नहीं थे हमारी टीम के तब अनफॉर्चुनेटली मेरे को अपना गेम प्ले दिखाना पड़ा था सबको नेम ग्रीन में देख के अच्छा लग रहा है थैंक यू ब्रू हेलो यूफो कैसा है सब बढ़िया आप कैसे हो Yeah, I think not many people actually have it. Impactful player और नहीं तो क्या ऐसे मेरा ट्रैक बुरा नहीं है मैं 2-3 बार खेला हूँ VLT के लिए एक बार हारे हैं वो भी थर्ड मैप में जाके और 2 बार जीते हैं not a bad history. You can spin it like the normal Bullet song, right? I'm actually not sure. I actually haven't checked the Yoru comb out. इंडिया का फ्लैग ऊपर रह गया क्या? Better check. Night market also is up, so might see इंडिया का फ्लैग मेरे साथ रहेगा. Stuff in yours. I'm not sure if you checked. I have not. Cool, काली भाई finals हाँ? Oh no! Oh my God, Meow 16K lag होते हुए मार रही हैं. Zombie power, let's go. Kaali bhai. That's like 300. How many did you get? दादा क्या होना चाहिए? All good रे. सब बढ़िया कैसे हो आप लोग? Right, I remember Sky Sports. What? 600. Sky Sports के टाइम पे I was not a good player. Taking away the मैं अभी अच्छा प्लेयर बना हूँ. Vitality Estelle. That shotgun paid for itself and more, I think. And she got a Phantom too. Yeah, it's a free upgrade. Asteria Jord. She got 600 and then तो है रे डोंबिवली में. 2k on top of मोहित. ये वो सब talent. From डोंबिवली. वो सीधे पिंग देखा रे मैंने देखा. मेरे पास भी वही आँखें हैं वही ऑब्जर्विंग स्किल्स हैं जो आपको दिया गया लेकिन ये लोग लैग हो रहे हैं रे भारी वाला. देख रहे हो स्किन कितना लेट से खुल रहा है इनका अटक रहे हैं ये लोग. पहले हो गया क्या फूलिंग देना फाइट ले रे बाबा. ओ मफिन was perfect, but you know the cabbages. She was overly aggressive in that one. She got punished for it. But still down to a 3v3 right now. अब इनके शॉट्स कैसे अजीब से लग रहे हैं ना ऐसा अचानक से नाम के वास्ते लग जा रहे हैं. Second map, yes. That time you didn't have a good chair, now you have. Yes, Brew. अभी chair है, सब कुछ है. ये सिंगापुर सर्वर पे हो रहा है रे. Both instead can still revive her teammate. आज VLT versus EXO. Yes, आज VLT versus EXO टेक का है. उसके बाद VLT versus Enigma Sky का है. They all lined up, they all died. Observer lag कर रहा है क्योंकि okay. Casper almost forgets to rest Britzy. हाँ यार stream का lag issue है. भाई लाइक नहीं हो रहा तुम लोगों से. लाइक तो कर दो. कितने लोगों ने लाइक नहीं किया? अब भी क्या अभी 1K हो जाएगा. अब भी क्या अभी
लिटरली अभी के अभी सब दबा देंगे तो worth it though because like it bought so देखो much फट फट 8 हो गया for Casper to come in with a swing from behind. ऑब्जर्वर इंसिन लेवल का पैकेट लॉस हाँ ना that's यूफो कितने बजे मैच 13-6 6 like we बजे predicted? ये कौन सी टीम है स्वे की टीम आउट हो गई आई थिंक कुडंट केयर लेस बोल के कोई टीम थी उस राहुल भाई आई फॉरगॉट टू लाइक कोई बात नहीं याद दिला दिया मैंने यस राज आचार्य हेलो ओमकार ऑब्जर्वर का ऐसा वो रोज होता है कोई बात नहीं लाइक किया है भाई ठीक है अभी कुछ लोगों ने किया इसलिए 900 हो गया मेरे को पता था कुछ लोगों ने नहीं किया मैंने जैसे ही बोला देखो फटाफट हो गया लाइक फटाफट next week Kolkata so yes 8 after that it's Icebox right and oh now 60k bhai with their own operator Raze operator really has lost steam already आयो को डीप बी का कंट्रोल दिलवा दिया अब रोटेशन हो रहा है मिड पे she was on a tear at some क्या point बात है भाई ये भी मैच पॉइंट इजी oh yeah and after that time इजी बोलते she kept getting shut down left and right and सब अच्छा शो अप कर रहे रे गेम shatters your confidence तो की लाइट चली गई थी आई नो मैं भी तो आया था यस क्रॉप you're not getting those kills it's just आज बीओ 2 BO5 खेलना है प्लेयर्स विल बी कहां 2 BO5 क्यों खेलना है भाई muffin loop is starting to put more इस चीज के 2 BO5 खेलना है Oh, that's another one, and it's all down to Dumpling. I don't really see her doing this. You're alone. 1v5, especially with a Spectre. Can you revive? Does get one. Still pretty healthy. Oh, gets the second as well. She has the rest right now. She's gonna face Britzy, and she gets executed. 13 to 5. I mean, you were close. 13 to 6. 13 to 5. ऐसे ही सब्सक्राइब के लिए बोल दो भैया सब्सक्राइब कर दो प्लीज लाइक भी कर दो that one tactical timeout was when they were दर्शन ने भी रिन्यू किया मेरा मेंबरशिप and they won everything after 11 rounds in a row for Asteria. क्या सीन है It's like sheesh, दो मैप man. जीत गए ये लोग वाइल्ड कार्ड का डे 3 चल रहा है There has been no other tactical. तीसरा मैप क्या है वो भी 5 मिनट में ही चालू हो जाएगा तूने देखा नहीं घंटा प्यारा गेम मैं बैठ के नीचे गेम ही देख रहा था और सबसे पहला गेम भी मैंने ही देखा था यूफो इज नाउ टिकटॉकर ठीक है प्रियो वन मैप अवे फ्रॉम लैन कैस्पर ने तो बहुत कंसिस्टेंटली खेला रे पहला वाला मैप भी इस वाले में भी बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है यार लेकिन मैंने मफिन का वो देखा भाई जेट गेम प्ले बहुत बहुत सेटिस्फाइंग तू ही बोला स्काई एक्सप्लोर और टेक 2 हैं आज कब बोला मैं आज कब बोला मैंने एक्सक्लेमेशन इवेंट्स 2 है एक में हम लोग 100 को फेस करें एक में एनिग्मा को फेस करें एक आज है एक कल है दुर्गा पूजा मीटअप करते हैं व्हाट से लेट्स सी मयंक करेंगे हाई टिकटॉक कल आना बे BO5 है क्या यस लास्ट मैच में फिल्म का एज देखा यस देखा विंडो पे मारा ना उसने मस्त जी का LCQ का कुछ अपडेट आई एम नॉट श्योर जहाँ तक मैंने लास्ट सुना था आई थिंक वो लोग चेन्नई जा रहे हैं टू डू बूट कैंप बिकॉज थाईलैंड में एंट्री नहीं मिल रही है और समथिंग लाइक दैट तो है मफिन इज ग्रेटर देन यूफो जेटमैन भाई वो VCT गेम चेंजर खेल रही है मैं मुंबई सर्वर में लड़ रहा हूँ लोगों से डिफरेंस है भाई डिफरेंस है गुड आफ्टरनून ब्रो वेलकम टू द स्ट्रीम इन लोगों का लैंड का क्या होगा पता है नहीं पता नहीं ये VCT कितने सारे ब्रांचेस वगैरह है मैंने स्टार्टिंग से ही फॉर्मेट नहीं देखा तो अभी कुछ समझ ही नहीं आता सेम मेरे को भी नहीं समझ में आता बहुत टाइम लगा मफिन को सिखाने में बट शी वॉज अ गुड स्टूडेंट ऐसा क्या समर्थ क्या बात है वो भी तो दिल्ली से ही है ना इफ आई एम नॉट रॉन्ग फॉलो करता हूँ मैं मफिन को इन लोग तो ये जब एस्ट्रिया में थी तब से खेला भी हूँ इन लोगों के साथ में एक बार वो एक ड्यूक खरीद ले फिर एक साउंड बॉक्स और पंजाबी गाना चलाते हुए जाना रास्ते पे ठीक है गुड आफ्टरनून स्वैग आई हैव अ बिग फ्लैट इन चेन्नई ग्लोबल को मेरा रिकमेंडेशन दे दो भाई आई वांट टू मीट देम सो बैडली बिग फ्लैट है आपके पास दैट इज़ गुड कॉल कहाँ से आ रहा है हेलो हाँ जी क्या चीज़ का ऑर्डर कहाँ से लाए हैं आप ऑर्डर हेलो हाँ कहाँ से लाए हैं ऑर्डर अच्छा हो सकता है किसी ने भेजा होगा समर्थ भाई आपने भेजा है क्या बाय एनी चांस आ गए क्या आप लोकेशन पे नहीं प्लॉट एक
एड्रेस लीक नहीं होने वाला। माइक बंद कर दिया मैंने भाई, डोंट। 5 मिनट में गेम चालू होने वाला है। FSL एलीट क्वालिफिकेशन मैच। तब तक थोड़ा एम लैब हो जाए, क्या बोलते हो? क्विक एम लैब हो जाए थोड़ा। ये जीतो तो क्वालिफाई फॉर लैन, यही सुना है मैंने वाइल्ड कार्ड का। वो लोग लैन के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। काफी दिन से नहीं खेला। 5 मैच होगा, बेस्ट ऑफ 5 है, 2 मैप हो चुके हैं ऑलरेडी। यार क्रॉसर क्या दिया होगा इन लोगों ने अभी। तो एक बंदे का 1,85,000 है स्कोर यहाँ पे। नो लाइफर है क्या या रोबोट है? बाई आउट एस्ट्रिया। देखते हैं, मोर इवेंट्स, मोर स्टेबल सीन जब हो जाएगा तब मे बी वी कैन टॉक अबाउट इट। अरे भैंस की टेंट। भैंस की टेंट इतना गंदा कौन देता है? VLT फीमेल लाइनअप कब देखते हैं? लेट्स सी। आकाश का स्ट्रीम देखा रे, वो सिल्वर 2 आया है। हाउ आर यू? सब ठीक, सब बढ़िया रे। यूफो नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है भाई, क्या करूँ तने? कोई आइडिया ही नहीं मेरे को। यूफो किसी भी स्पोर्ट्स टीम में लड़का और लड़की एक ही टीम में रोस्टर में क्यों नहीं होते? लाइक फीमेल अलग और मेल अलग टीम, ऐसा क्यों? मिक्स लाइनअप हो सकती है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन ऐसी टीम बनाई नहीं है किसी ने। अनफॉर्चुनेटली बनाई ही नहीं है किसी ने, या ऐसा रोस्टर है ही नहीं, पता नहीं क्यों। 900 सब्स लेफ्ट फॉर 50K। यस यो बे, कैसे हो? सब बढ़िया। हाउ आर यू डूइंग? रिकॉर्ड करते हैं। अरे भैंस की टंग। अरे भैंस की टंग। अरे भाई हक दिया मैंने। हक दिया रे मैंने, हक दिया। गन हटा दे, डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। कोई नहीं। यो राहुल क्या हाल है? 50 के लिए लोल करता है। सेटिंग्स करनी पड़ेगी रे, सारी सेटिंग्स डिलीट हो गई लगता है अपडेट के बाद। गाना चल रहा है बैकग्राउंड में, क्रॉसहेयर मेरा नहीं है। सेंसिटिविटी भी मेरे को थोड़ा ज़्यादा ही स्मूथ लग रही थी, पता नहीं क्यों।
Felt good. VCT LAN होने वाला है क्या? Oh boy, FSL, we can be our own heroes. प्रोडक्शन वाला बंदा कुछ तो कर रहा है. Welcome back, ladies and gentlemen. Valorant game changing. कुछ तो गत्ता फत्ता फूका ही है रे उसने. Here alongside me is Key, and we do have Hello. game number 3 coming up right now. Game number 2 didn't exactly go the way we imagined it, and well, I did. I saw it coming. You did. I did. I said 13 and 6, but now we're going to map number 3, and it's going to be Ascent. You know, 𝘼𝘽𝙊𝙐𝙏 Estelle, they're very comfortable on this map, but do you think that they have any chance up against a team feeling as hot as Asteria? Well, I mean, it's definitely not what we hope for in map number 2, but maybe 𝘼𝘽𝙊𝙐𝙏 Estelle can come back on Ascent, because this is their map pick after all. I mean, I like to say that hopefully they're ready for that, but you know, they weren't ready for their own map pick in the first map, Haven. Like typically you pick the map that you feel you're best at. And the fact that they lost on possibly their best map pick, I'm scared. Hi. The thing is, I don't think they can play Crosshair. Yes, Crosshair. Giveaway का result आ जाएगा. Yes, Harsh. Yesterday, it seems like Bind is the स्कोर क्या है? 2-0. 2 मैप्स जीत चुकी है अभी. Ascent है. Third map. Third map बोलते हैं. But they weren't ready for Bind. I think Bind would have. Yes, Harsh. How to play it, Sam Nakko. and they have an overlap with Asteria's map picks, and unfortunately for them, Asteria can play Ascent as well. Is that something that you know from experience? ये वाला मैप मजा आएगा देखने में. Yes. Where you pick 2-0 for Asteria. Best of 5 है. अभी और भी बाकी है मैप्स. Yes. ये वाला मैप भी बाकी है. But not esports. Back screen. Hello. At least I can play some esports, e-gamer right here. But we'll see if they can play this map, right? Ascent right now, like Asteria is starting on defense. Okay. We've seen 𝘼𝘽𝙊𝙐𝙏 Estelle. They struggled on both attacking sides. So that's going to be the biggest problem here. Like with most FSL teams, or many FSL teams rather, they don't have set executes that are effective all the time. They don't have the same mid-round map decision making. Like they can't just switch to a different site and be effective at that. Asteria is effective on that, and 𝘼𝘽𝙊𝙐𝙏 Estelle, they haven't really shown me that. And because of that, I don't know if they can actually win this map. You know, I actually think the one indicator of now they cut to my face, and now you can see my in and out shirt. Oh, nice. I was expecting. I took off my jacket, and now I'm caught off guard here. I'm a little embarrassed actually, but so one thing that is a good indicator of I think how experienced the team. भाई इनका कैमरा इतना अच्छा है या ये कुछ करके रखे हैं? And I think the ये तो लगता है RTX वो यूज कर रहा है बैकग्राउंड के लिए. Obviously has been Asteria in this entire lower bracket playoff. They just have been phenomenal at the mid-round decision making and the calls. It's been perfect every single time. It's perfect. I don't see that from 𝘼𝘽𝙊𝙐𝙏 Estelle. They make a lot of mistakes and they make a lot of misreads, and I think they second guess themselves way too much, and it's evident in the playstyle. And honestly, Asteria happy to capitalize on it. Yeah, it's perfect. perfect. Talked about second guessing and how it's evident. You can see it. Decisiveness. It's perfect. What's really key to taking, especially तीन स्क्रीन अच्छी होगी है ना. Hello Ritik, hello Deep. See in Asteria, the moment नाम चेंज कर लिया क्या Deep? How are you? I'm doing fine, Ray. They just switch sides. They just decide, okay, let's go. They just decide, okay, maybe we go back. But they're decisive. On the other hand, 𝘼𝘽𝙊𝙐𝙏 Estelle, it seems like अबे ये black screen नहीं है, ये blur है. What do we do next? या RTX blur use कर रहे हैं या RTX background? Exactly that. They are not ready. And Asteria, they're इन्होंने थूक लगाया कैमरा में. ठीक है. बोल elite क्या हाल है? Hello Ishit. Big announcement update. If you notice how प्रतीक हो गया announcement. Zowie आ गया. Hello मम्मी. मम्मी आई है चेक पे. The way Asteria take map control is that they What's always up? have room for I'd say VLT all female roster coming or what? where they can rotate and they have enough. अभी scene develop हो रहा है guys. Even if they want to, but it seems like when 𝘼𝘽𝙊𝙐𝙏, they don't really leave themselves open very much for other opportunities. They hard commit onto towards B, and we've seen it in the previous games. Even today in the previous series, they pick a site and that's basically. किधर देख रहा है यहाँ पे नीचे कभी rotate unless they're कभी इधर देख रहा है कभी इधर देख रहा है. bites them in the back because Asteria Snapchat or happy what? to play the waiting game. कैसे हो बेटा? मस्त मम्मी lunch हो गया मेरा.
and then just snuff चिकन out टिक्का the मसाला और opponent's नान round, खाए हम. find out where they are, and eventually take the round. Now, one thing you can notice as well, Asir are very good at playing a 2-2-1 split, right? There's one lurker, and two people take each entrance to a site. And I think Vitality Cell, you mentioned it, like, they just full commit maybe 4 people into one side, maybe one lurker at the most, but that one lurker is not enough. You need to split that 2-2-1 so that you can go for the trades and really open things up. And I think that's भाई इन्होंने भी बाल रंग किए अपने, इन दोनों ने दिख रहा है और इसने स्ट्रेटनिंग भी कराई है लगता है. गुड, थैंक यू मम्मी. ट्रिप पड़ रहा है भाई, ठीक है. VLT वर्सेस एक्सो कब है? आज है शायद. एक्सक्लेमेशन इवेंट्स इन द चैट. ऑफ इनका एस ऑन हेवन वाज ऑसम, आई नो राइट. कैस्पर ने भी बहुत कंसिस्टेंटली अच्छा खेला. विच गन हैज लीस्ट रिकॉइल? पोस्ट. यहाँ ऑस्ट्रेलिया कोई और की प्लेयर खुद मिलके बनाए हैं, खुद बनाया हुआ है उनका. We made it. अभी स्ट्रेट करवा लो, मेरे को नहीं स्ट्रेट. Yeah, so that's gonna be unfortunate because I really see Asteria just carrying on the confidence that they have. And let's also say that Vitality Estelle, they've gone through a grueling best of 3 just now against Chilang. And yeah, you know what, Key, I'm really thinking. I think there's a technical issue happening. I think this is why we're still on our faces. You think so? Yeah. Oh, but I mean, maybe not anymore because Agent Select is ready. We are going into the Agent Select. We're gonna have to see if there's anything spicy coming in here. And you know, I totally control this. The vanilla lineup. Ascent में Raze मजा आता है. Killjoy plus 2. ये लेने वाली है क्या? Phoenix? Looks like we're gonna see Omens of a Killjoy yet again. Hearth on the jet. रीना, dude, मजा आ जाएगा अगर इसने रीना खेला तो. कल मैं रीना खेल रहा था, क्या मजा आ रहा था वो एजेंट से. Yeah, I mean, it's nothing. फायदा दे they run like literally all the time, and for me, आपके फायदे हैं खाने के, ये सही है. हेलो नैन भाई आपको कॉल बैक किया मैंने. बिजी हो? So you used to be in Austria, yes. TEC Finals 6 बजे. स्ट्रीम का साउंड बढ़ाना बढ़ाता हूँ. अभी वो लोग बातचीत कर रहे हैं ना, इसलिए. Been a while. Open been a 3. Maybe 4. Maybe 4. Was it 4? Yeah. It's been a while. It's been a while. हाँ भाई करता चलेगा नैन भाई. Hello Devil, just watched your Hyderabad vlogs again right now. It was too good, all the moments. Yes रे. ये कहाँ का मैच है यूफो भाई? ये VCT है for females. FSL बोलते हैं इसको. You know, I think Sky is just literally good on it. Austria इंडिया की टीम है जो खेल रही है. Hello गौरंग. हाँ. उधर है ना? हाँ इधर. आपको कंफर्टेबल है? ऐसे कंफर्टेबल बराबर है क्या? ऐसे दिख तो एकदम बराबर, ऐसे ही तो मैं भी पहनता हूँ. हो गया काम आपने. बेवकूफ एक्सेल एकदम बेस्ट है ये. कंफर्टेबल भी है. कंफर्टेबल है. ऐसा बैठो, देखो नीचे से निकल रहा है क्या? ऐसा पीछे से बैठने से इधर से निकल रहा है क्या? चल रहा है क्या? कैमरा बंद कर. एक पीछे से लग रहा है तुझे. और डिजाइन्स मंगाने पड़ेंगे. सही है एकदम कंफर्टेबल, और क्लॉथ भी बहुत अच्छा है इसका. अभी एक बार धुल जाएगा ना, जाएगा फिर थोड़ा स्ट्रेच भी हो जाएगा ना. ये सब अपना बॉक्सर दिखा रहे थे मेरे को खोल के. बोलते कैमरा उस तरफ है ना. हाँ, अचानक से ऐसा पूरा उतार दीस. पूरा पैंट खोल दी. मैं बोला हाँ मस्त लग रहा है. हम लोग बॉक्सर में घूमते ना यहाँ पे. Anyways, audio is Molly right now. It's down to 1v2. This is doable. It is Muffin Loot after all. That kill onto Shrey was like, if you stare into the abyss, this abyss stares back. That was definitely a staring back moment. ओ भाई ये लोग रेज और फिनिक्स खेल रहे हैं. That was an Omen smoke. रीना नहीं लिया इन लोगों ने यार. Yeah, Omen smoke exactly. And now रीना लेते थे तो मजा आता था. 1v2 has to deal with 3. 2 bodies and 1 sentry. And now they know where she is. She's at 60 HP. There's just no way in hell she gets this.
She needs to get. Oh, and the run and Go 2-0. Oh my god, it hurts. Eupho backup business See, marketing but of boxer. It works. और नहीं तो क्या? तो ये Just टीम क्वालिफाई नहीं हुई क्या नहीं swing रे? out, run and gun with a ghost and. Go 2-0. Yes, third map चल रहा है. I mean, I think it's because they had the call that she was low on HP. अच्छा था रे, execute तो बढ़िया किया इन लोगों ने. Yeah, and you know, I think for Styria, it was just unfortunate for. Thank you, समर्थ भाई. अगर आप देख रहे हो for the cake, जाके खेलूँगा. I don't think she expected. भाई that they would shoot decathlon back से लूँगा. fast क्या enough. चीज़? And one thing to consider as well is that she had a classic. That means tracers do come out, so they know where it's coming from. Oh yeah. What a recon, man. Now, great recon bolt there. And look, Asteria, they love this. In round number 2, they like stacking on a site. There's actually 5 members of Asteria waiting right What a now, call. and it's a trap. Arey. And Hearth gonna take it out. Shot they're है not gonna Casper. get many kills. Casper अरे takes रे. one down, but they're gonna clean it up. This trap जीत गए एस्ट्रिया. has been sprung, but it wasn't effective at all. मारा है भाई उसमें भी कैस्पर ने दबा के दिया. Muffin Loop Supremacy! So I'm getting Insane मारा messages उसमें in भी chat, इन लोगों ने. like, I want one ये वाला person use करो, just, ये like, I नया wanna see वाला. these Black guys, they're लिखा है जो. totally date. Oh my God, नहीं they're इसके so बाजू में. together. ये. I mean, you're not wrong. Insane. We are cute, but do you want to go out? I have a girlfriend. Why you gotta drop? Why you gotta throw me under the bus like that, dude? All right now it's gonna be the buy round first here though, so this is gonna be. Ah, Way to क्या change smell the है topic, भाई. Alright, I'm gonna let that go for now. For now, and let's see if Meow is gonna let them go. ये free में मिला. Pain shells plus the molly here. They're gonna have to run, and Meow 16k takes. आटू का birthday gift लिया था ना? दो glasses. Casper down. उसमें दिया था. दो glasses? उसको दो चश्मा. तो उसके साथ ये लेकिन बंगाल में परफ्यूम गिफ्ट में नहीं देते किसी को. मैंने रख लिया. क्या कुछ भी है? अरे हाँ सच्ची में. नियम है, मतलब दोस्ती बिगड़ जाती है ऐसा बोलते हैं. जैसे हम लोग का हिंदुत्व में बोलते हैं रुमाल नहीं देना चाहिए. रुमाल से हाँ रुमाल नहीं देना चाहिए कभी भी. मतलब ऐसे यूज करने दिया लेकिन ऐसे देना नहीं चाहिए गिफ्ट ऐसा कि ले तू रुमाल. Napkin भी नहीं. तो ऐसा बंगाल में है. परफ्यूम देने से दोस्ती तबाह होती है. तो मैंने बोला मैं दोस्ती के खातिर एक परफ्यूम रख एक आँख से देख नहीं सकते, परफ्यूम नहीं दे सकते, क्या क्या नखरे हैं उन लोग के. एक आंख का बैड लक होता है. Spike is unrecoverable. There's no way she wins this, but ये देखो लिखा है हाँ नहीं देते बंगाल में. she needed to have checked that. She needed to have checked that corner. But Eupho wait, Sunday doubling. plans or what? ये watching the match, She chilling. needed to have hard checked that corner in order to win that round. But still a good endeavor. मैं भी 3 बंगाली हूँ. kills. मैंने ऐसा कभी नहीं सुना. गिरा क्योंकि नीचे. बाय 4 बाय kills, आता हूँ मैं. excuse me. अभी क्या स्क्रीम करेंगे या सीधा मैच का वार्म अप करेंगे? Still sway. 5 बजे वीटो है. Honestly, one of the 5:30 बजे से प्री शो, 6 बजे से टूर्नामेंट. Yeah, I mean, we talked about this, right? Match started at 6 o'clock, On Kappa. the receiving side of this, on the buy round, they lose to Casper का mod हो भाई, easy. Australia supremacy. लाका भी 20 hours से स्ट्रीम कर रहा है. Iron to Bronze 3 पहुंचा. Silver 2 से Bronze 3 हो गया वो. It's a fantastic. I mean महाबलेश्वर वाह घूमने गए क्या? गौरंग सही है. Everything that they need. आज कौन सा मैच है? फाइनल्स And है. they're looking much more Ekka. comfortable. Look at this opening pick, very early on in the round. That's Let's a go, shout Muffin. right there. Muffin loop. Look at Flash. a little bit of a miss. ये टफ होता है ये वाला फ्लैश करना Flash थोड़ा. was not really very good. Alema takes अरे, him down anti-ray good. She Britsi. gets caught with her utility out. Now it's down to a 2v5, and this is where it's actually hurting Asteria because they're on the Spectres. They Really? don't really do Bonus? that much anymore. There's a They will Vandal buy on Muffin bonus. Loop, though. Lower bracket में Australia, Zero lower bracket combo finals now, में. so she's gonna have to go for headshots. Excited for on the it finals, here. Now yes. it's down to 2v5. I am. Ilema is there for the hunt. Casper gets tagged, and there's the shock that's coming. 6 बजे Yeah, हमारा and मैच टेक का. Casper gets taken down 1v5 right now for Muffin Loop, but if there's anyone on this server who can do it, she can. Oh yeah, I mean Muffin Loop is just blessed with the good aims. But with 2 people, excuse me now, approaching from this angle, Oh they shot. don't check her. God. No, but Ilema किसके is there साथ है for the finals? trade. Muffin Loop, EXO के great against idea Dan on भाई. the swing there, but unfortunately for her, they're EXO के ready. against ही तो है Vitality, finals आज. they look so much better than the previous 2 maps. Like they're- EXO. you know, we said playing with a purpose, right? Like playing with a purpose also manifests itself when you're watching the players. They know. और where to कल go, they know Enigma what to के do, against है. they decide right away. In a क्या लगता है game कौन like जीतेगा Valorant, नैन where भाई? everything comes down to सही में नैन milliseconds. भाई. That decisiveness is important, and Vitality is still are starting to show signs. देख of लो that, guys, but EXO के there's one ओनर thing है I'm इधर afraid चैट of, पे. though.
If Asteria are पूछ down रहे it किसके again and साथ they है call a finals, tactical ठीक है. timeout, will we see another दिसंबर में will you timeout be in of Vashi? Yes, Gaurav. miracles yet again? Yeah. I will be. We'll see. I mean, you know, if any team can come back from a large deficit, Asteria has मेरे को shown नहीं that पता, they कल का are मैच very नहीं much देखा. capable. Nice shock dart. Yeah. Do a little bit of damage. Not as much as I initially thought. I thought it should Aka bhai Zod hai re. perfectly. Yeah, I thought they'd all go to half. 4-1. But you know, it is an eco for Comeback them, थोड़ा सा tough है. ये वाला round निकालना. As many kills as they can. Lucille has an alarm bot there. So Shot है रे Shrey. UWU का क्या होता है मतलब? Oh no! The second one! The second one finds two! They saw the first one, they didn't see the second. ये UWU का मतलब क्या होता है रे? मैं देखता हूँ काफी लोग लिखते हैं. मतलब कुछ cute सा मुंह होता है क्या? We probably had 2 seconds of it, like, they're gonna go bye-bye. But Asteria are gonna try to make this expensive. This is VCT for girls, guys. Message करता हो तुम 16K, तो आराम से 5 बेटा. HP, 𝘼𝘽𝙊𝙐𝙏. Cute face. Looking for ace. I'd get an ace here. Oh. Oh no! Of all the people to die in that one 𝘼𝘽𝙊𝙐 मर गई. 4 people in her sights. How are and she you? shoots. नहा ले छोड़ो. नहा लूँगा मार्जिल. खाना खाया ना अभी. थोड़ा सा मैच देखता हूँ. मेरा आज का कोटा स्ट्रीम का कंप्लीट हो जाएगा. फिर चिल करके अपन फाइनल्स खेलेंगे. VLT versus 𝘼𝘽𝙊. Double shock dart though. I mean, it's not a double shock dart in the Marcel, get me a cold coffee na, bruh. But 𝘼𝘽𝙊𝙐 just knew that, you know, if I shoot 2 shock darts here. हाँ मार्जिल आजा निला दे मुझे. रंग लगा दे रे मोए ढंग से लगा दे रे. If you know how to aim them. मैं तो तेरी जोगन 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 होई रे. For lineups, then you probably know what's up. भाई लोग बहुत वेल कोऑर्डिनेटेड खेल रहे हैं लेकिन हेवन पे भी देख रहा था रीटेक्स वगैरह कर रहे थे एक साथ. ओ वनरेबल हो गया रे बाबा. Those are a bit much. ओ Like Yeller, you know, using that ult ओ भाई. to at least get some information. Nice रे nice रे. Signs of life. 3-4-1 right now. अरे रे 𝘼𝘽𝙊𝙐 nice. is in a dilemma Nice right contest now. man. क्या Casper contest finishes किया the है. ball off. 3 members remaining. भैया for नहा Asteria, and लेते हैं, ठीक it's है. starting to look like हेलो दिग्विजय. they woke up from that whatever short. लिरिक्स की MC विजय कर दी क्या? इसके बाद VLT का कौन सा टूर्नी है? फाइनल्स है रे टेक का सुषमा. स्कोर 2-0. It's just 2 rounds that separate. ज़्यादा मत बोलो. ठीक है. कैस्पर ओपी रे. 2-0 रे थर्ड मैप चल रहा है. Yeah. छी भाई गंदा सिंगर. कोई बात नहीं. Situation, 𝘼𝘽𝙊𝙐. लिरिक्स तो बराबर ही था राज. For just 1 round. But Asteria, if they can string rounds together, that's gonna start streaking for them, right? The confidence that we've seen. मेरे को लगता है 5 राउंड निकाल लिए ना ये लोग डिफेंस में. अटैक बहुत अच्छा है एस्ट्रिया का. And they just, when they feel good, the frags drop. ओ When the frags भाई. drop, क्या सेटअप किया रे इसने. पिज्जा पे टरेट लगाया है. yeah, the enemies drop, and 𝘼𝘽𝙊𝙐. there's nothing they can do. But let's see if 𝘼𝘽𝙊𝙐 can keep this up. Let's see. Let's hope they're not shaking yet, because they've been playing pretty well this first half of the first half. रिट्सी अल्टी. Decent info given to रिट्सी अल्टी पे कल्टी. nobody there, and that's going to signal the B split to already go. व्हाट हुआ? Now, ओ it's going to be hard to actually line up a double dumpling. right there. 2 big kills. Bring us to a 3v3. Meow, check this corner, please. Corner dumpling. ओ एंड्रोल जीत गए रे बाप रे. Casper not ready for the push by ये Hearth. हर्ष क्यों खेल रहा है? वो हार्थ है ये हार्थ. kills for the हार्थ duelist. And Hearth stepping up exactly. मेरे को लगा हर्ष खेल रहा है. The only 2 players Female remaining for tournament. Asteria are the 2 duelists, but look how far away they actually are coming from. That Hunter's Fury, म्याओ आ गई. Oh no! perfectly placed. Yeah, It- backed into it at the last second. It Come was on, just Muffin. actually to slow them down from pushing, but to actually find a kill and bring it to a 2v1. Fantastic work from 𝘼𝘽𝙊𝙐, who has Anti just re. been the Anti in the bane chat. of Asteria's Yo, Anti. existence. Yeah, you know, Andy Zowie भाई, has कहाँ है? really excel in a sense. Like, কি ব্যাপার অ্যান্টি চলছে? কেমন আছো অ্যান্টি? Okay, here we go. It's How are you, my 2-5 brother? again. Is there a script going on? Because it's कैसे हो 2-5 एंटी yet यार? again. And here And comes the Asteria pause. call for a time. आओ कभी इधर हमारे I'm scared. हवेली में. 𝘼𝘽𝙊𝙐, I'm shaking. Whatever सन्नी their और coach वो or मिलके IGL आपसे देखा is मैं. saying during these pauses, All I just wanna the be jet part. players in one I frame. feel like this is some like life-changing 50k पे क्या करेगा भाई? मार्जिल के साथ नहाऊंगा. inspirational talk. Yeah. कास्टर भी चिल्ला दिया. कोई I नहीं. don't know what to say, but Who's ideal for Astria? it's coaching can be quite Not sure underrated or really. undervalued by Muffin people loop, who've maybe? never been coached before.
हवेली नहीं I feel हवेला like है इसका especially sometimes there'll be watchers that say, "What do you coach?" टेकन Or स्काई like, के बाद "What's कोई the इवेंट है timeout?" Or अभी like, तक तो they नहीं don't know how सुषमा much एक है mentality really plays in this high level of gaming. ओल्ड Like, you ऑप्टिक know, टीम how sharp मीटअप you are, और नहीं तो क्या how fast your decision making is, or how आई थिंक calm मफिन you है even are. If you've ever played in या like श्रेया है श्रेया even like वो a भी हो varsity सकती है team at any level. देखो पहले वो थी क्या नाम है उसका मिथिका फिर बीच में स्वेबी थी फिर श्रेया करती होगी मेरे ख्याल से श्रेया उवू श्रेया ऑस्ट्रेलिया से खेल रही है इसलिए शायद उसका पिंग हाई है They hired a coach from श्रेया इज C9, आईजीएल right? ठीक है Oh yeah. Is for VLT the playing last, Penta? I month think no. They have before LCQ, so it just goes to show टाइम that नहीं होगा हमें if you have a good coach, you can go. क्या हाल है आंटी You can do a lot, even with. कैसे हो Yeah, that's for sure. I mean, it could पता है even वंश be just someone in your team saying, गाइस "Everyone लाइक नहीं हो रहा क्या guys, NHK लाइक you just need to chill. Like You NHK just क्या? need to do this. Like everyone, you can bring AST won everyone 2 back maps to the रे same page with one timeout. थर्ड मैप चल And रहा है sometimes that's ये all you जीता need. तो वो लैंड Lucky क्वालीफाई हो they can जाएंगे take it back because right now Assyria don't actually have the cash to buy, so this is an eco for them even after that timeout. That's gonna be a good shock dart yet again. Oh my gosh, Shrey nearly eludes that. And spray down almost catches her off as well. Shrey gets one right before she drops here. मॉली डाल दे रे Yet again, another man advantage for बात सुनी उसने मेरी Asteria, but it won't be for too long as the trades were very much immediate. Lucille, लुसील get that drop onto Okay. Muffin Loop. No, Muffin Loop wins it actually. I thought that was Lucille. That had Lucille's duel Fun written all change. over it, but Muffin Loop prevails. व्हाई नो से शी इज प्लेइंग फॉर अ डिफरेंट टीम Definitely was ब्रैकेट्स किधर है नहीं cool पता there. She had a better gun. VLR better में होगा position. I think she had a timing as well, but I don't think she was ready for that. And yeah Assyria, they can play if they this was want doable for them. They don't have the weaponry, not that much at least, but they do have the man advantage, and that Ooh. Hunter's Fury is gonna buy even more time for the rest of the team. And Britzy can find his corner kill. She does find Dumpling as well, and this is where it looks dicey. The guns are on their side. Hearth Ult है रे does take Muffin Loop down though. अल्टी पे कल्टी है मियाँ ओके 3v2. They have to shut down the jet here. Oh, denied. Just absolutely denied there. Was that the showstopper? Yeah, that Casper was. does 2v1 get one kill though. Come on. And it's gonna look scary for Hearth right now. Not healthy at all. Half defuse Casper कर दो रे बाबा taps it. They might not expect her coming from the spawn side, शॉट but है रे Casper कैस्पर shot शीश was attacked. भाई राका स्ट्रीम फॉर 18 देखा अनिर्बंधा मैंने देखा That was it. लेकिन रैंक What पुश is तो up नहीं with हो रहा These These timeouts, timeouts. dude. What magic did he have? All right, you know what? Whatever Sheesh. those timeouts are, I literally just want to sit there and be part of it. Because I feel like I'll like Ping div realize bolte the हैं। meaning of life in between those timeouts. Suddenly I'll win सर स्टीवन freaking thrifty. I गॉड don't है रे know, कैस्पर like, जॉड I gotta give. Guys, I like really कर दो gotta रे। give props to these मेरे को guys. लग रहा है Because कुछ लोगों ने नहीं a किया अभी तक timeout of लाइक 30 हाँ वो तो है seconds, it's actually रैंक पुश तो really नहीं not a होगा lot. And the fact that you can come up with either a strat or राका अगले 20 घंटे में भी डायमंड नहीं पहुंच पाएगा मेरे को लग रहा है seconds, that's a tall आयरन से task. प्लैटिनम तो पहुंच That's सकता a था रे tall task for गोल्ड तो anyone. पहुंच सकता था वो Yeah, ब्रॉन्ज they're पे क्या probably कर रहा है gonna ब्रॉन्ज We सिल्वर might get some insight on it later in the interview. If Assyria do win. अरे 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 एग्रो Lucille takes Muffin Loop down. ओ though, so चलो एक को ले really गई dangerous right now, but Meow 16 थोड़ा gets aggro. traded 1-for-1. Assyria still not looking very good. That was an aggressive play by them, but it didn't कोई ना, really ठीक है। pan out so well. That was a 2-for-1. But I still Second think बार it नहीं hurts दबा Assyria, Can especially this girl line Casper. up play tech? Yes, they Get can, something Ray. clutch here. Going If they for the want. execute right now behind that owl drone. Hearth with her blade storm. ये तो ऑलराउंड के साथ उड़ के आई It's worth a shot. हर्ष हार्थ No one's there. लाइन अप Yeah, शॉक and डार्ट they're getting the plant down. Assyria are gearing up for this post plant. कैमरा Trying to see if ड्रोन they can find anyone who's a little bit out of position or Oh, greedy. पड़ी There's उसको। some shock darts coming at Britzy, takes some damage because she was in her owl drone. I think she took 90 damage there. That was a direct hit from the shock dart. And bounces back onto her Jeez. 𝘼𝘽𝙊𝙐𝙏. Hearth gets a headshot as well from the blade storm. Casper gets taken down. सोवा का And तोड़ Hearth सोवा ही gets लग रहा है another मेरे को headshot जैसे from जेट का Shrey. तोड़ जेट है Vitality Estelle लो रैंक are इज saying, वेरी "No, एव्ड अप इन this वैलोरेंट timeout ट्रू isn't gonna bring you 11 rounds in a row yet again. We're gonna shut that down right now." एनी चांसेस ऑफ VLT एक्वायर एस्ट्रिया पता नहीं I भाई love us lineups. They're so good. यार दे आर प्लेइंग रियली गुड How does she get so many shots? I think like किलो shock बहुत dart कम मिल kills, रहा है like, 4 मैं जाऊँ क्या kills राका right के now, पास or 5 of them? राका यूफो इज कमिंग टू सेव यू Around there. डुओ क्यू करके पहुंचा है क्या उसको She डायमंड must have done really well in आप duo. बोलो बस Like, 2 घंटे में डायमंड Wow. I did not. I did pretty well, Really? I'd say. Okay, fair play.
Oh, I didn't compete in traditional sports. I did mathematics. So Mathematical sports? Yes, math Olympian. I think you mean बोलता हूँ mathematics. राका को, राका मैं आ रहा हूँ. There's an actual class called that. But Casper is Raka, I'm trying to coming hold for the you, side bro. here right now, but there's a nanostorm coming out. She sprays through, and 𝘼𝘽𝙊𝙘 actually gets tagged down a little bit. 𝘼𝘽𝙊𝙘 with a frenzy here. Tried to go for ऐसे भी पास राउंड निकालने इनको 7-5. Yet again and take someone out. There's a recon bolt coming out. 𝘼𝘽𝙊𝙘 is tucked into this corner. Shock dart coming out as well. Luciel. 𝘼𝘽𝙘 just patiently waiting here, going to punish, wanting to punish Asteria at least when they swing, but Hearth just finishes him off. They don't even know where Luciel is yet. 𝘼𝘽𝙊𝙘 gets kill of her own as well, and the rest of Asteria, they're just stuck in spawn. One player left. Where are you, Raka? Casper, yeah, you have a Vandal, but there's 5 people. Well, 4. Gets She 1. keeps getting those fadeaway kills, you know? Yeah. Like, as she's about to die, she's like, yeah, I'm gonna take one with me. I'm not going down without a fight. Are you Asteria playing more? looking uncharacteristically lost. I I can feel like join you. I was expecting a Bro, bit more. QEZ. But we'll see right now. Message किया they राका को do have मैंने. the operator right now, and you know, 𝘼𝘽𝙊𝙘, राका we भाई talked about के their आंख देख लो strategies, बस. right? They just कोई like बात नहीं. funneling fire Fully to one sleepy side. and tired. And right now, Asteria don't उसको seem to have सो an answer जाना for चाहिए that. फिर तो. Yeah, Health खराब not नहीं at all, करनी but चाहिए. you know, again, Vitality Estelle ये is किधर your live है? map pick, and when it's your Twitch. map pick, most of the time you have a lot of good ideas on the attacking side, which is why I'm really not surprised by Sound is this, essential. scoreline right now. When it comes to the switch on the defensive side, I really think that's when we're going to see the story of what this map is going to tell us. But I do think it has to come up to at least an 8-4 if Asteria want to win this one. Look at how aggressive BL is though with this ultimate. Doesn't get very far, but still enough to clear the site and get the spike actually planted down though. Muffin Loop with that operator will not find much value off of it for now. आएगी वो. And आएगी you वो know, on हर्ष. a sense, आर्त आएगी. the operator I feel like isn't as good as it is on other maps. It's simply terrible for retakes. and because of how quickly the अल्टी site will go स्ट्रीव. down and fall to the इसलिए वो लोग पता है बीमेन से खेल रहे हैं. उन लोगों ने किलजॉय की अल्टी देखी है रीटेक के लिए. I feel like Nice. this is one of those maps where you really have to play the retake. अबे इधर अल्ट मत डालो. Casper gets one kill onto 𝘼𝘽𝙊𝙘. They're not checking the corners, so but Casper gets another kill for own, but no, it's a massacre. 𝘼𝘽𝙊𝙘 finishes it off. Come on, and 8-4 that's pistol, gonna be easy it comeback. for Vitality. So, you said at पहले में least skins 8-4, disable कर right? सकते But, क्या? you You can know, unequip you wanna do unequip them. 9-3? You know about the 9-3 curse? I do. What's do, your but take on ping difference in this match? Definitely unfair. I was gonna say that the 9-3 curse doesn't always apply. Valorant खुद ही बोलता है कि this game is playable till 50 ping. उसके बाद आपको experience नहीं मिलता है. So they are playing at a disadvantage, which is pretty clear. Hot registry में समझ में आ रहा है. But you know they have played very well as a team in the other two maps. So maybe. Yeah, it's pretty crazy. And look, Hearth with a quick onto Casper couldn't jiggle fast enough. And Asteria really looking lost here. It's the last round of the half. Instagram या Facebook पे Just announce one करूँगा last giveaway. round, and they're already a player down. One player indeed. And नहीं अतुल, it's fine. बना आराम से highlight. A little bit of a quiet game right here for 𝘼𝘽𝙘 as she lets them all pass, hoping that somebody walks into her crosshair, but they won't. They simply will just walk past her and take the site itself. And the 9-3 position curse. of 𝘼𝘽𝙘 has just made Yeah, 8-4 curse. ineffective. Retake now beginning 4v5. Yeah, I mean, hiding there. Hack कर दे even उसको, Alarmbot was वो spam में already मर जाएगा. Didn't get anything out of it. अरे and she रे, gets एक तो taken spam down kill from मिलता था Elgato, अभी. you know, who's on a late A short push. They're gonna have to try and clear out, but 𝘼𝘽𝙊𝙘 wastes so much time. Meow couldn't even find her even after peeking out short. And right now it's a 2v5 and Vitality is still. Come on, Meow! This. Meow 16k does take 𝘼𝘽𝙊𝙘 out, but Hearth is there for the trade. It's all down to 𝘼𝘽𝙘 who gets shredded by those knives, and it's a 4k for ये Hearth नहीं हर्ष खेल रहा है मेरे को लग रहा है. with a 9-3 half. The jersey giveaway will be done by Anna only. Pistol, right? Yes. Vitality Estelle, if they Announce win करेंगे हम लोग round देखते हैं by official taking channel से अन्ना के channel it's से. going to be a 10 to Hello, 3, Funky. potentially 11 to 3, and you know that's just too tall of a mountain to climb. But if Asteria can take this pistol round, bring us to maybe a 9-5, it's only be a 4-round Hello. difference. That's certainly going to be in the books for a comeback. Very, very much just
a possibility. नहीं चाहिए to मुझे get इंश्योरेंस from it. ऐसे होने चाहिए इंश्योरेंस का Yeah, if any of the Yeah, Asteria players, Muffin Loop, Meow 16K or Rock. Shrey, if they suddenly Rock. go out on a कितने tear, नंबर से इनके this पास defense- on this एवरीडे attacking नए side, नंबर से कॉल rather, करते हैं I think Lethality is still can still lose this. I mean, 9-3 curse notwithstanding, we'll really have to see. I mean, Asteria have had great execution. You can see the difference in the way they play as well. When Casper 9-3 हो गया भाई down, that's the opening for ये राउंड अगर इन लोगों ने निकाला और फिर गेम निकाला rounds. 9-3 का टैटू करवा लेना गाइस And Lethality is still, they're trying to still hold this. वैलोरेंट प्लेयर्स करवाएंगे No I chance fear to- 9-3 curse Spike is on Oh, air, but now nice they're रे, going in. Meow. Meow 16K with Alima. one kill. Now it's down to a 5. अरे 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 अलीमा को चार्ज कर दिया what a Casper shot. with another What a headshot. round, This is bro. so filthy right now. They even have a flank still. Lucille It's just looking around. She doesn't know what to do at this point. Lucille क्यों प्रोनाउंस करते One हैं player left, and I Lucille है वो really तो don't think बट कोई there's नहीं gonna be much for Lucille to do. Oh, Fun Lucille. fact. Okay, Lucille wait a minute. 2 kills. All right. 22 Proving to HP. be interesting. 22 HP. Still. Shreyu, a miracle if uhu. he gets anything else. Nice guys Yeah. 9-3 Fun curse fact, did you know that Lucille is also the name of a 9-3 का favorite क्या of a सीन है famous, 9-3 पे अगर आप artist, लीड पे हो Corsair. तो भी आप हार सकते हो ये सीन है 9-3 का BB Which King. gets her? BB King. Lucille Oh, BB King. Oh, SCAL Guitar was Lucille Lucille and him. Lucille oh that's interesting. Harsh Alima Let's see if Jumping she can, Lucille struggle and to run Bislerino together this time around because opponents की टीम के नाम Bislerino guys look like they're ready to get started. Bislerino Bulldog on Muffin. They're not messing around here. बिस्लेरी दिखा रहे मेरे को दूर से वो बिस्लेरी 5. Oh what the hell? Oh my I look I away. blinked. for मस्कार हो 2 गया, seconds and मैसाकार। they're all dead. I blinked and then 3 of them just मत died. The कर। clip just lit up. I mean, that was a page off of a Steer's book. They stacked this Bislerino. fight, but they got punished. Same as the Steer did. Oh, Shrew. Shrey almost misses Lucille Nice there, one. but pretty clean round. Indian from public side in the of chat. Asteria. And Killjoy this is Day where- for what? This is where the 9-3 curse makes you question things, right? अभी देखना लिख रहे हो KJ Div And it's KJ starting to look Div like Asteria are I'm seeing it. अपनी dude. chat ऐसे I'm चलती है seeing guys it as well. Like, Killjoy ने you know, Killjoy there's को an मारा तो impending, KJ Div feeling of impending doom all of a sudden, and then they're like, Casper क्या खेल रही है रे consistently we're screwed. most of the time 9-3 curse ends with 12-14 so It leading looks like team in the Light first Healthy half will lose yes Like you could see, VO5 है we have 2 maps lead third map is on yes they had a pretty good read, but just couldn't execute it. ये Let's see round if भी they can निकाल लिया ना, pick up पकड़ some लो। points up. Let's see if they पकड़ can लो win 9-3 curse this है भाई buy round. Yeah, well, find out if they can actually do pick it up. श्रेया This- ऊ ही this, तो कर रहा हूँ मैं श्रेया buy ऊ round नहीं is कर रहा very श्रेया important, ऊ right? Even if they don't. ओ like I said, they श्रेया have to keep ऊ it clean, but ऊ it's already too late for that. My because right God. now 30. It क्या has scene है already श्रेया। been sullied with the death. और यही मैप में हुआ था 9-3 हमारे साथ भी Fallen ally here, but they are looking to make it. वाह their क्या comeback. Okay, सीन है Spike साइड even if they get a साइड spike का plant in 1 kill, that's already It's a 3v4 enough man bonus round on the bonus round here. ये राउंड निकाल लिया ना बस They get a spike मजा ही आ bonus, जाएगा that's money for attackers. Chokes over If they lose Puffin more loop guns here, it's gonna be really chokes scary. over you are Muffin dead with the bulldog right now. chokes over Pushing up here, she gets LP. Oh, she was in her ultimate, so Dumpling takes her down, but there's अभी still realize three क्या? members alive for Syria. Aster And Vitality gonna have to be pretty clean in Vitality. this retake to bring a lot of guns over. oh I Casper guess popping out. Casper gets one. oh Goes for Casper the second as well, and OP it's already expensive down to a 2v2 Wow. right now. And Britzy 69. with the Spectre spray. Let's and go. This is exactly what we were talking about. They need to win उवू this क्या कर रहा है buy-round. अरे श्रेया In fact, उवू लिखा they उसके need नाम to में save is many guns उवू from this buy-round. UWU Instead, they lost. Yeah, I'm lost ooh. for words right now because I don't know what they can do because look at this Spectre spray. It's just absolutely filthy here. Casper, as the smoke dissipates, gets one, disengages, gets a second onto Heart. Let's Dumpling go, takes bhai. one to take down, Sheesh. But they don't Casper. care. Britzy with a For. double kill, cleans things up. Cas They for get OP, 2 guys. free For, rivals if in you the are. next round. They get the ठीक। win, and now it's a 9-6. Yes, 3 I know. rounds to उसको go for ऐसे Sierra प्रोनाउंस right नहीं now. करते नीचे आ वीडियो दिखाता उवू को कैसे प्रोनाउंस करते हैं हाउ टू प्रोनाउंस उवू लूसील इसको लूसील प्रोनाउंस करते हैं LUSEAL Not sure what she could do. लूसिया
𝘼𝘽𝙊 is hiding in the smoke right now, but this is exactly. She's holding a very crispy angle with the Desert Eagle. Sorry, Sheriff. Or sometimes And 𝘼𝘽𝙊 with the Phantom. Let's see, is it gonna be KJ Diff or what? Aggressive rotations, stopping flanks off her own. Whoa, KJ Diff. Seal down. KJ Diff. With a KJ Diff in the chat. And it looks like Asteria are still gonna find more kills. Shot Harsh! Hearth with yet another headshot. Really deadly with that Marshall. Gets pushed back with a pain shell. 3v3 right now. The spike is planted. 𝘼𝘽𝙊 is gonna try to kill 𝘼𝘽𝙊. 3v3. Shots not landing for the Plant हो चुका है. 𝘼𝘽𝙊 is अरे on the short. 2v2 doable है उनके end से, लेकिन ये लोगों के पास अच्छे guns हैं. Hearth is pretty low. Come on, Meow. Find more hits here as Asir are Let's playing go. this patiently. They're just hiding. They're just waiting for the rest of the light. Nice flash रे. अरे दोनों को flash करो. Good for one. The head is seen. 𝘼𝘽𝙊 gets caught there. 𝘼𝘽𝙊. नको nice. But 𝘼𝘽𝙊 is gonna win. क्या scene है? Can I get who? It's starting to become a reality. Hearth. Sorry. Not Hearth. broken. Hearth. In fact, it lives Yeah. on, and dude. Shot. Right? Guys, 9-3 कर दो है. Rounds in a row. T1 कैसे बोलता है? वो जो They है. picked up, but my question is right I now, when guess does scene है. Vitality Estelle अरे ठीक है. ऐसे करके बात करता है. ठीक है, 9-3 कर दो है. Yeah, that is actually. Oh भाई. that's ये actually- याद आ रहे हैं 9-3 वाले दिन Ascent. Look, I was gonna point out the crime against. क्या जीत रहे थे अपन? Which is my favorite card. फिर कुछ हुआ. 𝘼𝘽𝙊 at 7.8K, हालात and जज्बात the बदल गए. Virtuoso could have gotten a donation from her, you know. I mean, she got a clutch, all things considered, but Right? Oh, gotta think about the team's economy here. come on. A lot of Let's see, Guys, big ultimates available here. That's one player gone. However, target मत करियो. and man, Motherboard is just hitting those openings. Ace भी like आऊँ क्या? Yeah, let's see how many first ऊपर blood she आओ gets this क्या? round yet again. And it looks like it's gonna be a BXQ this time. Something different. तुमको for वापस रोना है वो Asteria. दिन Like, याद I करके. still haven't seen him go अब हम नहीं रोते भाई. just yet, अभी and they're still अनुज off ने that. क्या बताया था Already इस? committed. अपनी चमड़ी मोटी हो चुकी है हार हार के. Seal is still गेंडे की stuck in चमड़ी the है. zone. Doesn't really want to get out yet because there's no smoke to Whoa. get her back to safety. Instead, she's gonna say, "Yeah, Ping I diff don't है need भाई ये. safety, ये I'm सब gonna shots kill," ऐसे but नहीं she मार gets सकते. immediately traded by 𝘼𝘽𝙊. 𝘼𝘽𝙊 is really low right now. 20 HP left on the Sova. Paranoia comes out, but no I'm one is 4v3 in है. already. They're already all on sides. That was just a waste. Come on, Muffin. Muffin Loop is on. Oh, what a flank. Here as well. Finds the head onto 𝘼𝘽𝙊. Nice flash. Flashes out. 𝘼𝘽𝙊 gets one kill, gets two. Bisleri no. 𝘼𝘽𝙊 takes something down though. It's all down to 𝘼𝘽𝙊. Hunter's Fury to be deployed. Not gonna land on anyone. बाजू से आ रही है वो. नको. Oh. The swing out almost. Right to his Discord पे आ जाओ Euphoria के साथ. But it's looking like a stereo. Bisleri no. 8 to 9. अरे हाँ वो Bisleri है. Bisleri no. They're one round away from tying things up. That's a milestone right there. He had to Face line cam up. पे Ace आने वाला है. Eupho को टपली पड़ने वाले. Gotten this back for अरे ये last वाली player ये देखो ना. Muffin Bisleri no. headshot her. Phoenix खेल रही है उनके team में. So good. And look, Bisleri it's OP. 9-8 right now. We were in a 6-round deficit. Oh भाई कर्स Everyone तो talks है. about the 9-3 curse. I hope it doesn't come true this time. Like नहीं हो रहा क्या guys? Cancel Eupho. It's already tied up. आज STS से भी गाली सुनने का मतलब कोई नहीं रे. Look at this. Now 9-8. The curse protected Muffin Loop there. It did. Like just saved her. Just like बहुत अच्छा round है ये. Bullet just went Economy straight, reset you होगी know, क्या like, इनकी? yeah, Tab just नहीं one देखा रे second. मैंने. plot armor. Proud moment. Let's go. Samarth by 7 months. See what they can do now. Lighthealth. Thank you. Really can't buy a kill. Meow 16k with a quick headshot onto Dumpling there, seeing defeat immediately. Dumpling को Gets पड़ा control Dumpling. over sight. The spike is already going. ओ भाई ये ulti से कितने दूर पहुंच गई? Using her ultimate to get a little bit more information. The plant is gonna go down, and it's gonna be a retake for Vitality. So 4v5 right now. There's a recon 𝘼𝘽𝙊. coming out. 𝘼𝘽𝙊 is gonna be a victim of 𝘼𝘽𝙊. So what diff? That spot and. Oh what Right now, diff? I'm not sure what they can do. There's the Cosmic Divide coming out. 𝘼𝘽𝙊, they're not expecting this. Oh, Gets one 𝘼𝘽𝙊. kill, gets Three? the third. All Down right. to 30 HP though. The lockdown's coming in, but so is the defuse. Can they stop it? I just don't think so. It's already more than half, and that's gonna be the round. They gotta save these. Nice round, very close. Luke gets 𝘼𝘽𝙊, who is I believe Muffin is on fire रे.
अब टाइम आ गया है एस का ऊपर आने का और ऑफिशियली डैमेजर को डैमेज पहुंचाने का। तो फाडेव That, yeah, but at what cost? How many rounds in a row did it And take Eupho, for क्यों them to भाई? actually win one? Vitality is क्यों something. भाई? They're struggling. They can't एंटी get रे one. एंटी लिखो चैट They can't get one in. Even the one that they won. आपके नाम के एमसीबी से कर रहा है ऐसा क्या? You know, triple kill. सॉरी And भाई at the same time, गाइस लाइक कर दो यार, कुछ लोगों ने नहीं दबाया लाइक का बटन, in order to win that round. दबा दो ना और सब्सक्राइब भी कर दो यार प्लीज प्लीज गाइस। But she was able to just sneak in there because of that kill on Fabrizio. अल्टी 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 भागो 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 भागो। They didn't react fast. ओह To find information. लकड़ी की काटी काटी पे To help Shrey get out of that. Now it's down to 4v5. Vitality is still नाइस रे मियाओ। guns, but you know. लेकिन उधर कुछ अलग सीन हो गया रे बी पे, Kills as well. Meow 16 कुछ लोग उड़ गए। gets a second kill, and now they're going to try to go for Anti 2v1 on this 2v2 rather on this A site. If they can get 2 clean kills here, it's going to be pretty good. Yeah, we can play अगर tournaments में opportunity मिले या something like that. We can definitely play again. Pakistan teams. There's nothing. Oh. 900 more for 50k. 1v3 here, and Asteria, they're looking worse for where they're getting put into the back seat right now. And in तुम काम ही ऐसे करते हो लाइक के बाजू वाला बटन ही दबता है, ठीक है। Yeah, but we've seen like K4 ओहो 8-11 भाई। Guys, power to Astria दो guys, power to Astria. Yo ट्राइले इग्नोर नहीं कर रहा रे मुकर्रम, क्या हाल है? They're going to have to eco this round, I believe. अस्सलाम वालेकुम मेरे भाईजान लोग, कैसे हो? I mean, prove me wrong. 3 of them can buy, so I think it's fine. Yeah, I think they have to at this point. Like Asteria लाला भी जिंदा है। लाला Lala mode on. Ready for this operator. Hearth been deadly with his op. Pulls it out this time. I think first time in this second half. Sheesh. Only the sheriff on her. Probably wants to just get a little bit more information. ये स्कोर देख के मेरी बहुत फटती है। Bot is gonna get some information, but they still don't know that there's an operator in play. Muffin Loop pushes. Phoenix की अल्टी कितने जल्दी आती है लाला। Can you sign my stream for Dayan Abdul bhai? Euphoria confirm हो गया new VLT member. Nice shot right there. And Ilema has just been on हाँ एस आ रहा है क्या? Entire game. कब आ रहा है? कहाँ से आ रहा है? Shop darts has just been doing so well. Hearth looking to seal. कितने बजे आ रहा है? कब जाएंगे? लेने जाएंगे क्या हम लोग इस आज या कल या वो लोग डिलीवर करने आ रहे हैं? In this map here, but I might speak too soon because remember. इस जल्दी बताओ इस न्यू मेंबर कब आ रहा है? There's just no money left. In the back up until the shot. वालेकुम अस्सलाम। Yeah, it's बैंगलोर से आ रहा है। कब तक आएगा वो? कैसे आएगा? कौन लेके आएगा उसको? हाँ ज़्यादा रिवील नहीं कर रहा। 2v4 situation. I'm not अच्छा ठीक sure है। how much Assyria still have left in attack, but we've seen them in worse scenarios. We've seen them win clutches. There's a headshot from भाई Shrey. 12-8 हो गया भाई। 5 HP remaining though, and she peeks at a misopportune time. ज़्यादा रिवील नहीं कर रहा। Match point for Vitality Estelle. Match point here. 4 rounds away, and I think नया टीममेट है रे अपना। Game number 4. लाइनअप में थोड़े चेंजेस होने वाले हैं। We could be seeing it. We could still go to the 5th game. What's the next map? Are we going to Breeze? No, Icebox. Icebox. Breeze was bad. एकदम सही बोला। टीमोन आ रहा है रे, शोभित शेपर्ड। एक अरे टीबोन आ रहा है रे बाबा, फाटू है यहाँ पे, टीबोन आ रहा है। Another round and टीबोन आ रहा है, टीबोन रहेगा बूट कैंप में, शोभित शेफर्ड। But if anything, Asteria has शोभित शेफर्ड ओफी। Yeah, I mean Shrey with the sheriff there just took two scalps of her own. If the rest of the team can. अरे भाई फाटू को पाल रहे हैं बूट कैंप में हम लोग। We don't need two more. Scary, right? Like if you're Lethality still, this is where you want to close it. खिलाओ पिलाओ। ट्रेन करने में कितना टाइम लगा है फाटू को पता है? खुद जाके नहाता है वो। That's gonna be a lot of map control taken here by Asteria. Good flash coming up right here. It blinds up Lucille, but doesn't really force her back. शेफर्ड रे शेफर्ड। भाई ये राउंड निकालना जरूरी है भाई। I'm surprised they actually flashed that only to move out. They don't actually check it. So I think they scared them a little bit though. You can see they're spooked. They rotated. देखो इसका नाम लग रहा है कि नहीं बिस्लेरी नो?
defenders kind of got pulled. Shreyash, thank you for renewing the membership. मेरी जान के टोटू. There's an opportunity for them to get in. 30 seconds left. Yeah. ऑटो कुत्ता नहीं गैस सिलेंडर है. A little bit of वो भी सही है. wiggle into. The lockdown won't secure the top of heaven, so Muffin Loop has to maul. चलो अच्छा है रे अल्ट पे ये लोग ये राउंड निकालने की कोशिश कर रहे हैं. ओह भाई इसने जो शॉक डट्स दिए ना इस गेम में राइट टू सोफा खेल रहे हैं उनके टीम में. Geometry. 10 seconds left, they get the spike. क्या है इस. ठीक है guys. See if they can actually Meow right में. They did get the spike down. Oh, Showstopper gets absolutely shut down by Lucille. And Hearth and 𝘼𝘽𝙊𝙐𝙏, it's all down to Britzy. If there's any player that can do this, it's probably gonna be Muffin Loop, not Britzy. And we're gonna see the fourth map, guys. Dada Budi biryani पे views कभी खाया नहीं है मैंने. And they win map number 3. 2-1 guys. We are going to go into map number 4 here. कोई बात नहीं. Surprise twist at the very 9-3 कर्स नहीं हुआ. And so यार sheesh man. नहीं यार इंडियन अच्छे टीम्स नहीं खेल पाते ऐसे. मैंने देखा है ये चीज. कोई बात नहीं. फाइन. जी केपो मैप 4 विल बी 2 स्वैप साइड्स एट 556. क्या लिखा उसने. 2 मैप बाद में होंगे क्या. बिस्लेरी वगैरह सब लीव कर रहे लॉबी. Sova. And she has 2 duelists in her team, a Jet and a Phoenix. 556 का मतलब क्या है. अभी ब्रेक है क्या. This is what you said, right? To win. तू किसका. एस्ट्रिया 2-1 से जीत रही है एस्ट्रिया. And 𝘼𝘽𝙊𝙐𝙗 showed up for this map. Like she लाइटलिटी अभी वाला मैप जीती. एसजीटी टाइम है रे चोमू. इंडियन टाइम में कितना होता है इस. कितने देर का ब्रेक है इसका मतलब. लाइटलिटी फर्टिलिटी नाम से कोई टीम है क्या. फर्टिलिटी होता उनके टाइम में 556 है. 2.30 आवर्स लेस कर. 556 का 30 मिनट्स लेस करूँगा 26 होता है. मतलब 5 मिनट बाद ही मैच चालू होने वाला है गाइस. किसी को टारगेट नहीं कर रहा मैं. एसजीटी टाइम. हाँ जी उस रात अच्छा खेला था जैसे इन लोगों ने खेला. अभी देखो गाइस हम लोगों का भी मैच है. VLT versus EXO from 6 PM. It's a best of 5 TEC gauntlet. And tomorrow we are playing against Enigma from 2 PM. 2 PM है ना. What country is Muffin from? She is from the Baker's Nest. Sky. Bro, we are playing Enigma on Monday on 2 PM for BO5, right? Confirm. अरे राका का क्या सीन है. राका को हेल्प चाहिए क्या. जाओ क्या गाइस. क्या सीन है राका. रैंक का मैनेज किया और व्हाट. भाई कमाई होगी भाई. अब वो एक इमोर्टल अकाउंट खरीद सकता है. इतना पैसा मिल चुका है राका को. क्या सीन है. रैंक क्या पहले ये देखो. सिल्वर 1 क्यों राका क्यों आज की कलेक्शन से इमोर्टल अकाउंट ले लो राका. इजी पीजी. नशा हो रहा है क्या राका. ओ राका सुन रहा है क्या. इस बार स्काई स्पोर्ट्स सीके जैसा है. स्काई स्पोर्ट्स का फाइनल पता है क्या हो रहा है. पता है यो हैरी यो काजी पता है. और बंदा आप लोगों को पता है स्काई का फाइनल्स कैसे हो रहा है गाइस. सुनोगे तो आश्चर्यचकित रह जाओगे. बताओगे यार. इमोर्टल अकाउंट तो 10K में बिकता है तो मेरा ले लो.
वेल प्लेड रे राका। वाह यूफो ये कर लो तुम। गॉड हो राका। दम पे जाऊंगा आयरन पे सोलो। डायनासोर बना दिया ना मैंने तो। डायनासोर बना देता। डायनासोर बना दिया उसने भाई। मुंबई सर्वर लो रैंक बहुत बेकार है। मैं भी करूँ क्या? आयरन 1 to इमॉर्टल 1। मिश्रा जी दुर्ग I cannot pronounce your name but thank you for 1000 on Gpay. Wow मिश्रा जी क्या बात है। 100 on Gpay. Thank you. अब तो ले ले अकाउंट, खरीद ले पैसे से। क्या बोलते हो गाइस? मैं भी करूँ क्या? आयरन 1 to डायमंड पहले करूँगा। कैसे हो? सब बढ़िया। थैंक यू फॉर द 2 months मेंबरशिप ऋतिक भाई। मुंबई सर्वर लो रैंक बहुत बेकार है। नो रे करते हैं। बीसीसी का बताओ क्या गाइस? आप लोगों ने सुना ही नहीं किसी ने। काई का क्या सीन है फाइनल्स का? ना भाई रहने दे, माइंडफक हो जाएगा। नहीं हुआ रे मेरा। अब मैं मुंबई के सर्वर में खेल खेल के मेरी चमड़ी मोटी एस फक हो गई है। फक हो गई है। ही इज डूइंग 24 आवर स्ट्रीम। पता है रे। बोलूं तो स्काई का जो मैच होने वाला है ना, स्काई का टूर्नामेंट का है। भाई पायल पता है 5 feet 9 inches टॉल है। मेरे को अभी पता चला, वीडियो देखा मैंने, रेडबुल का एडवर्टीजमेंट आया ना वेनम भाई का और इन लोगों का। 5'9" नसीब। आप लोगों की हाइट कितनी गई चैट पे बताओगे क्या? स्काई का किधर है वो? तो ये देखो गाइस, स्काई का मैं बताता हूँ। स्काई का ये जो हो रहा है ना, ये इंडियन प्लेऑफ्स है ठीक। इसके बाद जो मेन इवेंट होगा ना, मेन सब मेन इवेंट, उसके जो 2 टीम्स फाइनल्स में जाएंगी, वो 3 बार BO5 खेलेंगी 3 दिन। 3 बार BO5 फॉर 3 days। 5, 10, 5 फुट, 4.5 फुट, 3 फुट, 2 फीट क्यों आप? 3.5 फीट क्यों? 4.5 फीट क्यों? 4 फुट 9 इंच क्यों? 5 फीट क्यों? 5 फीट 1 इंच क्यों? 10 फुट क्यों? जाओ, गवर्नमेंट का जॉब मिलेगा आपको लैंप पोस्ट का। 6'1", 6'1", 6'2", 6'9", 7.7। तुम्हारे टोटे के साइज के बारे में बात नहीं कर रहा मैं, तुम्हारी हाइट के बारे में बात कर रहा हूँ। 10 फीट, 10 फीट लोले। मैंने सिर्फ 2 दिन जीतना है, 1 दिन। ये सब तो ठीक है भाई। अंकित पंत और अंकिता वाला फोटो देखा है किसी ने? पता चलेगा तुम्हें हाइट डिफ क्या होता है। दिखाता हूँ। इधर है वेनम 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 वेनम। कहाँ है? हाँ ना अंकिता का इधर है क्या अभी भी वो फोटो? गाइस किधर है वो फोटो बताओ ना। किधर है, किधर है, किधर है, किधर है वो वाला फोटो? किधर है, किधर है अंकित पंत वाला? किधर है यार? राका के साथ फोटोज मिल जाते हैं। अंकित पंत वाला फोटो किधर है भाई? किधर है? ये रहा। हाइट डिफ। समझ रहे हो? ये अंकिता तब कितनी गोलू वोलू सी थी, अभी देखो। यार अंकिता बहुत स्वीट है, लेकिन सबसे ज्यादा स्वीट है वो, सबसे ज्यादा स्वीट। ओ भाई आईफोन और व्हाट? इसको कमेंट करता हूँ। क्या स्पोर्ट्स प्लेयर पैसा कमा पा रहे हैं? द विनर कैसे पता चलेगा? पता चलेगा स्टैंडिंग नियर आईफिल टावर टुडे गाइज। हेलो, दोस्त है मेरे। 6 feet 12 inches, दे आर डिफरेंट मेजरमेंट्स। वाह भाई। NFTs पता है किसी को?
ओ ओ कमेंट देखो, ओ क्यूट, हम भी क्यूट लिख देते हैं। ठीक, तू भी आईफोन है क्या? मैं आईफोन हूँ अनिर्बंधा। आ गया सीन है स्काउट। भाई ये स्क्विड गेम्स खेला है, देखा है किसी ने? VLT का लोगो। दैट्स कंडीशंस। आईफोन है मेरे पास एक 11 प्रो मैक्स। अली सेठी क्या गाता है, उफ। अली सेठी के गाने सुने गए तो आप लोगों ने? कौन सा गाना था? दिल लगाए भाई, ये वाला गाना सुनना गाइस, आपकी रूह को हिला देगा ये गाना, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, रूह को हिला देगा पक्का। 109% श्योर हूँ। अली सेठी, ठीक। दिल लगाए, ये गाना सुना। आप लोग क्या गाने सुनते हो गाइस, हिंदी गाने या इंग्लिश गाने, बताना। ये वाला गाना सुनना है गाइस आपको, दिल लगाए या बाद आए। क्या गाना है ये? मेरा प्लेलिस्ट देखोगे क्या गाइस? इंसेन है प्लेलिस्ट मेरे पास एक, उसमें खाली लोफी सॉन्ग्स हैं। कॉपीराइट नहीं, नहीं मैं नहीं चला रहा वो गाना। कॉपीराइट तेरे चैनल को हिला देगा। नहीं रे, मैच स्टार्ट हो गया, ऐसा क्या? नहीं यार, वो मैसेज करेंगे मेरे को ऐसा। यूफो गेम चालू होने वाला है, जल्दी स्ट्रीम चाहिए क्या मेरा प्लेलिस्ट किसी को? अंग्रेजी, हिंदी, सिमर सिटी प्लेलिस्ट शेयर करो ना, करो ना, अपने मेंबर्स के लिए शेयर करो क्या खाली? राहुल भाई, हाँ थोड़ा सा स्कैम कम्युनिटी में जाने का। माई एक्सक्लूसिव प्लेलिस्ट फॉर माई एक्सक्लूसिव members, there you go, visibility all channel members. Oh, scam or what? कितना हरामी हूं ना मैं, हरामी। OP in the chat, दिल चैन की नींद नहीं आएगी। ठीक है, एक बार दूंगा इधर, जिन लोगों को अभी मिल रहा है ले लो, ले ले भाई ले, इधर दे दिया, लो भाई लो। TM किस दे दिया रे बाबा, चैट में 1 टाइम दिया लेकिन, ठीक है आराम ज़्यादा। कोई मेंबर लिंक शेयर करो प्लीज, आंसर इनकमिंग। क्या मतलब हमारी? ना रे बाबा, दे दिया रे, इधर दे दिया रे बाबा, ले मेरे सारे प्रिय सॉन्ग्स इसमें है, लो फी सॉन्ग्स जो आपके रूह को हिला के आपको कष्ट में डाल देंगे, unless you are used to it. Icebox, what a map. English playlist, लियो ले लो, दे दिया भाई। Guys 2K लाइक्स हो सकते हैं अगर बटन दबा दोगे तो। 30 लोगों ने नहीं दबाया है, जिन लोगों ने नहीं दबाया उन लोगों को नींद नहीं आएगी अच्छी। लोफी, यस, लोफी सॉन्ग। रू तो ठीक है, कुछ और ना हिला दे। There's almost no choice. Raka streaming for 20 hours of what? I know, Ray. All the best today. Thank you so much, Shreyas bhai. Thank you for being a member for 2 months and for the highlighted message. Hello, Ajay Shetty. You could bring up YouTube right लो now. भाई 50 लोगों ने दबाया, सीधा 2K लाइक्स हो गए, ले लिया प्लेलिस्ट, बढ़िया सैटर्न। क्या हाल है यूफो? नहाया नहीं है ना अभी तक? तो नहीं रे भाई, आपके लिए स्ट्रीम कर रहा था मैं, आपके लिए दिग्विजय भाई, इस वजह से नहीं ना पाया। छी भाई लिख रहे हो आप, ठीक है मैं भी फ्लेक्स करेगा। अरे 6 months मेंबर और व्हाट? मैच कितने बजे? 6 बजे। 30 लोगों को कभी दबाने का मौका नहीं मिलेगा फिर, ठीक है। कांग्रेट्स फॉर 50K। कहाँ भाई? अभी दिल्ली दूर है, समझ रहे हो? दिल लगाए या बाज आए, सोचना है बाज आए या बाद।
However, it's the value of it isn't very much the same thing. There's a reason why the best, most meta. Jord or what, Rahul bhai? Thank you for I wouldn't be surprised to see a mirror the match 2 months membership highlighted message. And 𝘼𝘽𝙊𝙊𝙏, welcome to the lieutenant. Picks that we would not be expecting here today. Yeah, we'll have to see. But गलीना क्या डाल गले में क्या डाल के रखे हो? साफा है भाई, स्टाइल है भाई. राइले सच्ची बता, अच्छा लग रहा हो कि नहीं? पूरा भाईजान लग रहा हो कि नहीं? बताओ. लाला. But she's not even close. Do you watch IPL? No. ठीक है जगराज. Team Arrow going through the same phase VLT did last year. कोई बात नहीं रे ट्रायल है. Welcome Evil. Bro, this song is not good. क्या दिल लगा है गाना? अच्छा नहीं लगा निरुद्ध? क्या हाल है भाई? So long Saturn, 2 months. Thank you. मेरे को लगा टावल है. नहीं यार, मैं पूरा लाला भाई. लाला भाई. मैं 2 बार सब्सक्राइब करता हूँ ब्रो. नहीं, 1 बार. ट्विच के बाद आज यूट्यूब सब बड़ी. थैंक यू सो मच यार इविल. आज रात को ट्विच पे हम मचाएंगे माहौल. तो मेरी जान लग रहा है. ऐसा क्या यश? चलो भाई, मैं चाहता हूँ आपकी प्लेलिस्ट सुनने. ठीक है. स्कोर क्या है? 2-1. अरे मेरे प्लेलिस्ट के लोफी सॉन्ग सुनो रे. मैं एक ही प्लेलिस्ट में सारे गाने डालता रहता हूँ. तो आप लोगों को लग रहा होगा क्या गधा है. ऐसा नहीं है. उसमें काफ़ी अंडी मंडी सॉन्ग्स भी हैं, लेकिन लास्ट के जगह पे काफ़ी सारे लोफी सॉन्ग्स हैं अच्छे अच्छे. श्राउड 5 दिन से 16 आवर स्ट्रीम कर रहा है. उसको भी पूछो रैंक अप करना है क्या? ठीक है. एस्ट्रिया won 2 maps and Vitality won 1 map. Which पर ASMR. What's up guys? Can you feel me? Can you feel me inside you? Can you? Am I audible? Can I get inside you? So good. So damn good. Summer or what? हेडफोन वालों ने कुछ महसूस किया होगा रे बाबा. 2 rupees ASMR. We don't want to feel inside you. ठीक है. प्रुता ने लिखा muted. They hit all their shots and win the rounds. And if they have Kishang! Major! Welcome! It's gonna... Majors का एक नया ग्रुप बना है. जो भी मेरे मेंबर्स हो जाके कम्युनिटी टैब से लिंक लेके ज्वाइन कर लेना. Thank you for becoming a member. Thank you so much for supporting bro. Thank you. Position. Maybe it'll work out in their favor, but guys, the fact that they're starting on the defensive come side close. A little bit okay. नहीं भाई, अब नहीं करूँगा बाबा. With the Omen. दिल लगाए या कुछ लगाए. Just with the Viper spit deployed on the defensive side towards whatever. क्या बाज आए. Sorry. आपका ट्विच भी है? यस ऋतिक. भीख मांगता हूँ मध्य ASMR. खून आ रहा है कान से. हेडफोन लाल हो गए. ठीक है. यूफो 28 अक्टूबर तक 50K हो जाएगा क्योंकि 28 अक्टूबर को फर्स्ट व्लॉग अपलोड हुआ था. ऐसा क्या? एक साल में 150K vlogs. Take towards B. God. As all of the members of Asteria will be grouping up there. Will be spotted out by the turret. This is where you want to see that Viper wall, right? To discourage ASMR सुन के घर वाले देखने आ गए. Look, they don't have a Viper. They have a lone killjoy staying on Lucille. And she's immediately spotted. She's immediately moved out, but Lucille says, yeah, I can play Killjoy anyway. Muffin Luke gets taken out with a quick headshot. There's the wall coming up for Asteria, though. The Nanostorm coming out, discouraging the plan with Meow 16K. Responds with a headshot of her own. Shrey takes 𝘼𝘽𝙊𝙊 down as well. And there goes the spike down. Dumpling is the smoke up. 4v3 right now. And Vitality, let's see if they can get to the spike. It's really hard to defuse in this open spot. It is, and without a Sage to sort of block off the other angle, it's going to be tough. Britzy landing a nice tap on the head, though. Not getting the kill just yet, but still eventually, Britzy will find the final shot. What a round. Hearth, and that's going to be the... Let's go, Astia. Thank you, Kishang. Abubakar bhai, welcome back to the membership. Actually, honestly, there wasn't... Kishang, thank you for becoming a member. Abubakar bhai, thank you for renewing the membership. Still, let's go, Kishang. It works out because I feel like there's just not enough utility from Vitality to stop. 2-1 चल रहा है रे.
लोफी सॉन्ग्स की प्लेलिस्ट की लिंक है ये रहा. इस प्लेलिस्ट के एंड में है लोफी सॉन्ग्स मेरे फेवरेट वाले. You mentioned it, right? Viper allowed them access to the site. Sage putting that wall up really defends the spike, and we've seen teams like A Celeste, for example, use a counter wall to defend themselves while they defuse. And right now, मेरे को भी Astria के लिए खेलना है यार. being able to hold this B site because they only have Killjoy at this point. Yeah, the Killjoy, I don't know if it's going to be enough to hold down the B side on its own right now. Lucille will slow them down for a second, but you know, it's not the same as like having a Viper wall and then a snake bite, you know. It's completely a different story where you have the Astria is leading and then the snake bite. It doesn't slow down as much as you initially hope. फीमेल एंड मेल का अलग-अलग टूर्नी क्यों होता है? ऐसा कुछ नहीं है, मेल लोगों का अलग होता है, उसमें भी फीमेल्स खेल सकती हैं. फीमेल्स का एक एक्सक्लूसिव होता है. Like they're hitting anything just yet. Casper gets that kill, and the Lear is absolutely perfect. Muffin के लिए खेल रहा है मेरे को leaving Dumpling all alone. डंपलिंग का मतलब पता है गाइस आप लोगों को? मोमो. Second round, right? Flawless. You don't lose. स्काई स्पोर्ट्स का फाइनल्स कल है. All 5 guns. अबू बकर भाई. I saw Muffin Loop take कल damage. और आज है टेक का फाइनल्स. Might have been from like a snake Oh my Red Gaming, thank you for becoming a colonel. Do join the Colonels Den bro. Community tab में मैंने Colonels का एक पोस्ट किया है, देखना, which you can see. Colonel लिखा हुआ मैंने, तो thank you so much. Rao Gaming, Red Gaming पढ़ा मैंने, sorry. Team. Astria is Indian team, right? The teams that have lost. And ये Southeast Asian team है. Vitality. It's because they can't build up an economy, and for Astria, being able to maintain a lead requires maintaining your economy. And right now, I think they have Discord a server chance का to decide, honestly. Even link with expired है शायद, check if you subpar can. guns, ऐसा even क्या? just Spectres, अतुल they can go expired for है क्या? the side, but A is even better. रिन्यू side, किया रे because राहुल. Spectres are effective in the 40 लोगों ने रिन्यू नहीं किया, पता है? Like पहले 100 के करीब कुछ मेंबर थे, 30-35 में से 10-12 लोगों ने किया है रिन्यू. राहुल वो हुआ ना 30th के बाद, तो काफी लोगों ने लगता है अपना वेरीफाई नहीं किया पेमेंट वगैरह, तो अभी लोग आके रिन्यू कर रहे हैं ऐसा. VLT का नेक्स्ट मैच आज है 6 बजे. फाइनल्स है टेक का BO5 अगेंस्ट टीम एक्सो. नाइस रे. Actually, ये लोग वो एग्जीक्यूट करने वाले थे मेरे ख्याल से. यस, I've seen Gambit run this, and they'll boost ऑरेंजेस से over जाके that, फर्स्ट फ्लोर में प्लांट करने का. boiler, but I think they're going to eventually go and try to Improvise move किया. over to that B site right now. Lucille, good hold thus far. Looking for Casper. Casper अरे will not, नाइस रे. will actually drop alongside Meow. Lucille goes down, not until she takes 2. Muffin Loops followed up shortly there. ये फ्लैंक से राउंड निकल सकता है. मफिन को जिंदा रहना है खाली. अरे Mufin, where the last player has crept up. It's Britz all alone. 14 seconds left, but she could get a couple of kills from here. लैग रे. पिंग डिफ मरी. अरे मरी नहीं वो. रहना. कमांड वाला लिंक सही है, डिस्क्रिप्शन वाला चल रहा है. Survive a buy round. और डिस्क्रिप्शन वाला गलत है, तो फिर आप प्लीज एक्सक्लेमेशन डिस्कॉर्ड करो, चैट से ले लो. Lineup of Vitality still, and you think, yeah, there's no Viper, there's no Sage, and it's like, सही है यार यश. this is either going to be brilliant or really, really weird. हेलो वाचिंग अबेस, मैंने भी किया. सही है अबेस, थैंक यू यार. You go so off meta. जिन लोगों ने भी मेंबरशिप रिन्यू की और ली, थैंक यू, रियली अप्रिशिएटेड गाइस. Don't have a exactly. और किमाया क्या हाल है? कैसे हो किमाया? You kind of look a little bit silly, don't you? But hopefully The Jort Singer took a nice round on their first gun round, so if they can string a couple together, if they can get a few rounds under their belt on this defensive side, then we might actually just मेंबर स्टॉक शो करते हैं गाइस आज रात को. क्या बोलते हो? संडे है. आफ्टर द मैच क्या बोलते हो पब्लिक? मैं बीमार हूँ. क्या हुआ किमाया? Keep this up because Astria are on the buy round this time around. For them, they're on the upper. They have the upper hand, and the Viper wall is gonna make defenders stay on B. There's still some lurkers mid as well. This is like I said, it's like Nats, right? From Gambit. And Shrey takes a lemma down. Muffin Loop gets a kill of her own. सर्दी खांसी. अरे रे. Only one defender left here. Have your medicines. So it's going to be difficult for Vitality itself to fully rotate here. The spike does go down. Oh, Dumpling shot. peeks as she's actually pinged. So I think that was a bit of a misplay from her. Shouldn't really peek at that time. Shot है रे. लोग क्या crispy shots मार रहे रे 20 पिंग में. Right now, but Astria survived this round with 4 members alive. दवाई लाता हूँ. Vitality Estelle are reset yet again.
this is the problem with you don't have a Viper on Icebox, right? Because you know when you have a Viper on Icebox, you can leave like your toxic screen. और आज tournament भी था तो rotate the A. You know what I mean? और And, like, खराब और just side dump के मार utility in one side and go कल to the Enigma other. versus Can't do VLT है that yes yes obviously because the कल VLT versus Enigma है आज VLT versus EXO है 6 बजे कल 2 बजे है मैच exclamation events in the chat आपको This पता is चल where the जाएगा not having a Viper really comes into play. Sure, you have Killjoy lockdown for retake, but it just looks a little bit inflexible, a little bit I don't know. It does look a little bit inflexible. बहुत हाई डोज का दवाई है रे ये वाला अभी वाला I होम्योपैथी का really don't feel that Sentinels besides शराब का टेस्ट आता है that useful here, and Shrey takes Dumpling down. ओए Oh, takes a second one down as well, but Hearth is gonna take Shrey down. Casper is gonna swing onto a लैग हो रहे हैं ये लोग बेचारे 100 पिंग पे खेल रहे हैं पॉट है रे मफिन that their lineup can do because Vitality is still no Sage, no Viper. Yeah, I mean, I don't want to be like overly censorious of the lineup here, but nice at some point its fangs will start to show right here. So maybe we will be proven wrong, but thus far it's looking like Asteria is just finding every single gap in Vitality. Pulled and cuff for it. Vitality is still side and हेवन में मफिन का एज देखो देखा रे देखा होम्योपैथी यस यस the entire lineup of Vitality is आउटरो सॉन्ग मेरे बायो में दिया हुआ है रे like if you're running this lineup on Vitality, होम्योपैथी यस one of the strengths that you have is the ability with that खाने में तो मस्त लगता है चीनी होती है उसके अंदर लेकिन duelists, right? And गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो रे कितने लोगों ने नहीं लाइक किया अभी तक क्यों they're waiting in the back of the sites, they're क्यों not getting guys control. I'd like to see them take Shot. mid. I'd like to see them fight on belt. yes But none of that is happening right. Okay, now they're doing it. Now they're pushing mid. They're making full use of oh their lineup. मफिन But is it gonna matter when their A site is just going to करते हैं क्या broken right now? Dumpling get a nice double, and that's gonna be the flank perfectly executed here. There is still a res available for Aster. I do not think they're gonna be able to get it off this round. However, still a 3v3. Yeah, it's a bit too एक far. revive है? The two members that actually got picked off there. There's the defender. यार ये क्या वो पीछे Jojo रिवाइव lockdown करने किसी being को committed as well, हाँ but रिवाइव कर सकती है एक्चुअली just an opportunity for a rest. Nice, here. Muffin. Takes one down. Uses his miss. Is probably gonna get caught. There's the rest For on the the lineup? Oh, do they have the lineups for this? If she has the lineup, I think they easily deny this. There's just spray Diffusing. onto the smoke. Diffusing. Lucia is getting really low right now. Is it? हाफ डिफ्यूज्ड है It's No. not- No, no, not no. really completely थूका गलत there, है. but she's just Oh, curved nice. off the Perfect second. I mean, too. there's the snake bite coming down. Dumpling only with 70 HP left remaining. She's gonna Nice try to round, someone Ray. already on top, and now 16k gets it. That lockdown. राउंड है रे It's not अकेले as रुकी रे वो effective as- साइड पे It It's also countered by the snake bite. और क्या बैकअप देने आए रे वो स्मोक फोक देके बचा दिया रे उनको Let them res. fuck. It The let them Viper. res. Yeah, because of the Coffin fact is that, cracked, you know, guys. Vitality They don't have a Estelle- choice. Vitality Estelle were waiting for the timing of the lockdown to go in, and during this time, Asteria's like, उनकी "Yeah, बिस्लेरी you know लोग को what? देखो और हमारी We're gonna मफलिन go को back, देखो We're gonna go for this res. We're gonna play it Oh for my the- god we're gonna get रायना the Viper डेव up, the utility चैट पे लिख player देता for हूँ that गाइस snake bite. That's exactly what they did. They buy रायना so much time that डेव Asteria just sit back. They don't even have to take that many duels. They peak 2 people, and the rest was history. Yeah, I mean, I don't normally feel agent lineups are that important if you're hitting your shots, but I think on a map like Icebox, you can clearly see the agent difference here. Just Muffin is everything that a cracked. Viper lets you do, like this one. She's effective because she can put the wall down and still watch the flank from afar. They don't need a killjoy, they don't need a sentinel for that. And it's so effective. There's 0 flanks right now because she's watching the back. They are, in fact, going for अरे बिस्लेरी that B side with haste, with impetus, with speed, and it looks like that speed will be enough. They've barged their way in here. Can they hold on to it though? It looks like Dumpling got that kill, but it was in fact Ballerina who did it instead from the shadows just to check the flank here, maybe to deny that lineup play, but the lineups already have been deployed here. 𝘼𝘽𝙊𝙐 will be good for 1, but in this 1v1 position, all she has to do is wait. Wait for the tap and then swing out. No more time, doesn't matter. In the end, Shrey, she just wins this 6-1. And Asteria, they're looking very much like they're gonna take us into a 3-1. बहुत बढ़िया खेल रही है रे Yeah, I mean, we've harped on it so many times, but this lineup is not doing well for them, right? Like लाइनअप like डिफ हो गया रे शुरू में you're ही gonna run वो तो लग रहा है at least you need a purpose with it, right? You don't choose it just because it's your comfort Yeah. pick.
But she's not using the Shrouded Step to get into aggressive positions. She's not going up. There's so many places to go up in. You can go up in A screens for an off angle. You can go up. Finally I'll get use Octopus on Twitch. रात को You करेंगे. can go up on B as well. There's just so many ways to do it. Mostly. You're just playing Omen like Brimstroke. Brimstone. अरे श्रेया ऑस्ट्रेलिया से है रे. A little bit of a different game leaking out into it, but yeah, 20 versus 100 like ping. I said earlier, if you're gonna be playing that Omen, you gotta be taking those fights like this. I like this a little bit more here. Dumplings getting close, getting aggressive, especially because there is no anti-flank on Asteria's side. This is something that they could be exploiting. They could be going for those fast flanks since there's no Cypher, there's no Killjoy, but instead they're just going to bypass each other completely, which makes it so difficult. Yeah, but 16-3 dying there is actually pretty dangerous because Asteria, okay, they're using this Viper's Pit, which actually covers a lot of ground on Kitchen, and they're going to be planting on top of the nest in the middle. But this seems difficult still. It's a 3v5 right now. ये round ही निकालने वाले हैं क्या? Can kind of still hold this. That one kill is important. Now it's down to a 3v4. Ult भी बहुत insane वाला There's a किया lot है. of outplay, a room for outplay here, right? Like the spike is open. And look at this beautiful Viper's Pit right The there. gap. This is deliberate. The way that they play it like this, it's for a purpose. They know that they Arre, can't arre, control arre. Kitchen, and they look at the Shrey is just dipping, ducking, and weaving. Hello, knowing which guys. fight to take, playing around and outside of her Viper's Pit. क्या round convert किया है? Masterful. There's just such purpose to whatever they're doing, such value of every single piece of utility that we're not seeing on the other side. That Viper's Pit is really Sheesh. nice. Like, the reason why it's shaped like that. And इन लोगों despite ने playing बहुत on top बहुत कुछ instead of गलत किया था ये राउंड में. बहुत कुछ गलत किया था. B-main का कंट्रोल नहीं था, कोई फ्लैंक नहीं देख रहा था. बेचारी मियाओ मर गई. लेकिन फिर क्या रिकवर किया है? out of that, she had a whole wall to herself. She could just go in at any point in that wall and come out, pop out at any point there. And that's so effective. 7-1 right now for Asteria, and Vitality Estelle, they're getting these kills, but they just can't secure the rounds. You know, they're doing well in the kill department, but we know on a map like Icebox that it's all about real estate. You need the map control. You need the, not just kill. Oh, that's a shot and a half right there. Sure, okay, you get the kills, fine. Can you close out the round? Can you convert it into wins? The answer has been a no. 6 बजे साहिल भाई is able to actually take it away and get another kill, bringing us to a 2v2 mid, completely open. Yeah. Looking to be the lynch. Australia से now, where do they go from here? Dum They know they dum. have one towards A. They know that they have another towards B as well. So I it's think all about Casper picking their GC. poison. No, she didn't. No. She just It's stood all- there for like 10 seconds. Maybe they're thinking about where to go, dude. और They have a res. नहीं They नहीं can pick नहीं up this orb and go for the res actually, but Casper, oh no, turns the wrong way. Thinks they can get punished from that. Thinks they can actually get away with it, but instead it's Dumpling to come out with a punish. 25 seconds left, Shrey from above. 1v1 right now, 23 seconds. Has time to run to A, in fact. If she ran to A, she could have made it actually. But I think she's gonna have to face off Hearth here. She's gonna stick to Spike. Yeah, she took the gamble there. So that's थोड़ा gonna be हो गया second right for left. Vitality still, but If they qualify, No, they go they to get Singapore the for second round, lands. but Yes. even then, they're so far behind that Asteria, even if they lose out here, हो जाएंगे वो they're लोग still qualify gonna मेरे को come लग into रहा the है. second half with a lead. They got this. Yeah, you know, but still, this is an attacking-sided map. I mean, regardless of how you cut it. I think they got this. So I really think if Asteria do 7-5, if Vitality get a 7-5, even an 8-4, it's still within the realm of possibility to come back from this game. It's still possible. Yeah, I mean, it is, but at the same time, I'll just have to say that Vitality haven't been the cleanest on the attacking side. So even though it's an attack-sided map, I'm not entirely confident that they can bring it back if they don't win enough rounds in the first half. Yo, Pinky. Let's go, Mid Asteria. presence now being shown by Asteria as they commit 4 members towards it. See what पता है they Muffin can 10 go off 68 पे खेलते हैं. instead. And that's going to be their play towards that A side dash. अरे इन लोग उतने high-end PCs पे खेल ही नहीं रहे हैं. There to deny, pushing through In that smoke, comparison to possibly Vitality. denies any idea Mechanically of any weak है वो motion लोग. of them getting closer. But
hardware disadvantage भी है. Very soonly they might be able to plant it, but What a round. Meow was able to clean up What a round, 𝘼𝘽𝙊𝙊 man. from What the a top round. here. Now they know where the last player What a is. round, man. 𝘼𝘊𝙊 able to finish things off with a late flank. One-sided चल रहा है That's gonna फिर. be 8 rounds already for Asteria. Hello, Chirag. It's yet another reset for Lethality also, by the way. Look at their cash. Like, hardly any is the answer right now. And Asteria... Okay, I think we've seen a 10-2 first half before. When was that? I feel like... बहुत hardware differ है. I think only Meow and Casper still have a decent PC. Rest 3 of them don't even have a decent PC or FPS. What we saw was like 100 Thieves come back on like an 11-1, dude. आज finals है TEC के. EXO versus VLT. See if they can actually do this, but Lethality, they are on that eco right now. Meow 16k is gonna go up to Nest. Muffin Loop takes Hearth out. And A side is virtually open. It's only a lone killjoy here. They don't really have the guns for this. Doesn't even have a shotgun. I think that's just a classic in her hands. What? And this spike is gonna get planted. Wow. Lucille is there. Hello? Oh, she doesn't even get the kill. What? Razor classic. Wow. But Britzy is gonna take Wow. Alema and Dumpling down. They do take the Sage down, but it's all up to 𝘼𝘊𝙊𝙐. Only a Spectre in her hands. Her Empress is... 10-2 हो जाएगा मेरे को लग रहा है. If there's any agent that can do this, it's gonna be Reyna on the Empress. Oh wait, what? Meow. Yeah, Britzy is from Pakistan, I know. एक ऑस्ट्रेलिया से, एक पाकिस्तान से है और 3 इंडिया से हैं. I've never seen Jet's dash look like that. That was... Muffin has a good PC. Muffin का सही है PC. वो stream करती है. Britzy का 68 से है. like a वो with hyping. Okay, horizontal अच्छा. dash. Yeah. What a plant, man. Just dash forward, I think. क्या गुर्दा है. Might look really funny because of the gravity and... Backup नहीं था उस टाइम पे लेकिन plant करने चली गई first floor में वो. Even now, Hearth can buy full armor. लेकिन imagine these girls sitting together on LAN and playing. I think if they started क्या खेलेंगे ये लोग? क्या comms होंगे इनके? Since they love going for duels so much, they might हाँ as बढ़िया well, खेलेंगे ये and लोग. playing slow on Letality's side. अच्छा ping I मिलेगा would love इनको. to see them pick up some ops and maybe just shut out the opposition with you know, but I didn't see any of that. It's just been duels and rifles all day long, and then they refuse to save. अरे Yeah, I think only... बहुत cheap position पे बैठा था वो. And Lucille gets it. कौन सा map चल रहा है? Good start for Lethality. Day Let's see Dust. if they can hold the onslaught though, because there's all... जली नहीं खेल रही पता नहीं क्यों. around here. Let's see if they can find more picks for Lethality. हाँ यार इंडिया की जूलियानो है भाई. Letality have इंडिया की जूलियानो क्या? to a one-man advantage, 2 ultis available. वो फॉरेन की मफिन है जूलियानो. Tough. रीडर्स चल रहा है थोड़ा सा बर्फ गिर गया है खाली यहाँ पे. The Viper's Pit is available if they wanted to use it. Yeah, they still have the Hunter's Fury as well. So for post plant, it's gonna be pretty. Pakistan, good for them Australia, and personally, India so से it's players gonna है. be really good. But whether they can get the spike down Oh. is another story, right? There's the Viper's Pit being used. Dumpling is playing aggressive here, but there's the slow. The Sage slow orb is actually discouraging Chibak. Dumpling from pushing in. Has to dip out a little Oh. bit. There's the Hunter's Fury being used to counter the lockdown. Doesn't get Oh, that yeah. much more information though, but they still do have the Viper's Pit. 10-2 मैंने बोला ना. Gets one down. 10-2 Asteria are 10-2. looking lethal here. Another 10-2 1-for-1 है. trade, but Asteria are up one yet again. टच कर उसको Now मत जा. they have to go back into the speed. बेचारा One HP Dumpling. left and Dumpling बेचारी can't even Dumpling. step into near that spike because that snake bite is gonna kill them. Hearth has to step out, finishes off Meow 16k, but Britzy, a lineup of her own, gets the shock dart. Hearth takes Britzy down though. It's all up to 𝘼𝘊𝙊 versus Hearth. 𝘼𝘊𝙊 gets the क्या kill. मस्त खेले and रहे ये it's लोग. 10-2 first half for Asteria. तो ये playing for different team रे. Put around right there. बेचारी. Just the Viper's Pit. के लिए to सब चलेगा. perfection, and now we're here, 210. Do you have any bad bloods with EXO? Yeah. No bad blood रे. Like It's that just the fan. backside of map. We'll have to see. Fans. We'll have to judge. This pistol map is crucial. Yet again, extremely important. हम लोगों for के मुंह से कभी भी बैड माउथ करते सुना है किसी की Vitality टीम के बारे में? because they lose this one. They're down 11. How can we and be they're gonna bad have mouth to an esports organization or a team that is based out of They're India? probably Why not would we? equal, Right. So they're gonna have to. Competition force is fine, rivalry is fine, but you don't have to take down someone that else to gamble that you win that so that you are force fight. superior. And pistol rounds. Scoreboard में we've वो seen बात कर सकते हैं हम Asteria लोग. take Pistol rounds left and right here. So I feel like Lethality is still are gonna have to dig deep here.
They will, and they will have to really, really try hard. This is where we see whether they're ready for their attacking side or not on Latali's side. What do they have to offer on this pistol round? 6 बजे मैच है Okay, never mind. It's a free A site. They took a gamble somewhere else, and so Spike will be planted. Instead, it will be a fresh, straight up 5v5 retake coming at you. Take बहुत tough होता है 5v5 retake. A side not really the easiest to retake, but they don't have the lineups. They don't have the snake fights. 𝘼𝙬 gets a kill onto Dumpling. That shock dart doesn't really clear the corner, but 𝘼𝘽𝙊𝙬 gets 1 kill. 𝘼𝙬 finally Nice, doable hai. Oh my god. gets a kill of her own. It's now 4v2 right now. Lucille 4v1 easy. doesn't get anyone. Easy. Last one alive, no cover for her, and He's not going to Thailand. सुना रे मैंने. My big dream is to bring all the gamer girls to a good platform, and so that they can get food. honestly, just So that they can get good recognition, and I have a good idea for that too. Like That is really look nice. how- I told you this earlier on before the start of the game, Easy right? pistol, right? Like, if you look Guys, at like का their बटन नहीं दबाया आप लोगों ने, दबा दो फटाफट दबा दो, मेरे को पता है everybody was covering 40 it. लोगों ने नहीं दबाया है. Everybody was looking the right way. वो कौन हो, Nobody had- जल्दी दबाओ. There were no gaps. And even in those tiny gaps that there were, somebody was there to respond. And that's why that retake just Astria went के so Discord पे phenomenal, जाऊँ क्या? because they were just so in sync, like a pack of wolves just hunting down prey. That's what we saw from Astria. चिल्ला रहे होंगे वो लोग. Yes, Yes, they got yes. force here. Otherwise, this is pretty much it. Woo. and this is the exact same thing they're doing on this round. They're giving away A. They नहीं want क्या to go for बोलता their retake. Look ये at मैंने leave कर दिया 𝘼𝙬's था. ready. If it's A, I'm gonna snake bite here. Gonna deny default for a few seconds. But the spike is gonna go down. A little bit of an awkward spot for the spike plant there. But Astria are gearing up for this, and they're gonna take Oh down my god, Lucille. 11-2. She was trying to flank, but instead Muffin Loop gets the kill. She already has a Vandal on this second round. And 𝘼𝘽𝙊𝙬, they're gonna have to get more kills here, but Casper takes 𝘼𝘽𝙀 down. It's now down to a 3v4. Dumpling gets 1 kill for him, but Meow 16k responds with the Marshall. Aggressive push here from Dumpling. Gets GG's two. होने वाला है. Oh. Switches to the ghost in time. Is What? able to get Dumpling. What a heartbreaker there. Dumpling with a great aggressive peek. They're finally being aggressive, but gets denied by a ghost. And Astria are now on match point, and they're almost qualified for FS Elite. Asteria 1 round away from qualifying FSL Elite. 𝘼𝘽𝙀𝙀 still have come a long way. They are a team Oh bro. homegrown, very much a team that has started out from virtually Oh, nothing and bro. just became an impressive powerhouse all throughout. But just this growth, I think, has just not been enough to come up against, Asteria, a team who have been in the circuit for quite a while. The experience, the individual power, the individual skill Pongo. of these teams of Message Asteria कर has दिया इन been लोगों proven को. too difficult to deal with. And with this judge, it could be the Pongo nail रे. in the coffin. Can they even deal with Meow right now? Because Meow, 3 Ah, bullets GG's. left. All she needs GG's. is 3 They did hits. it. Reload, dashes in, stylish They finish, did it. and that's gonna be the GG Nice. players to close out the Nice, game. Ray. Area, they're Nice. gonna be They going did it. ahead, and they're gonna be representing They did their it, boys. team, They did it. country, their region in the FSL Elite coming Oh, up this boys. October. I am absolutely psyched for that. Let's take a look at this. They did it, boys. They did it. Well done, well 4 done. players of Astria. Well done, you just went guys. top. Britzy. GG's guys. Britzy has 3-1. 10 Let's kills, go. but actually is a little bit lower in the average combat score. He gets GG's, less Ray. chip GG's. damage, more What a cleanup show, Ray. there. What a show. What a show. कर दिया गाइस, कर दिया इन्होंने. बहुत अच्छा. जी रे, आग लगा दी भाई, आग ही लगा दी. कहाँ हैं ये लोग? इनसे बातें करता हूँ. You guys in Discord? Congratulate y'all. If you all free. We'll hop in. Celebrate करने में join करते हैं guys इन लोगों को. Join करते हैं. Hello. Congratulations. अबे दूर गाली oh shit
Oh shit. Congratulations रे But to stream देखो सिर्फ, he's crying. Congratulations Why रे is he crying? What? He's crying. Congratulations रे congratulations Thank you. Thank you. Thank you so क्या much. खेला रे क्या खेला वन साइडेड अफेयर ओ माय गॉड ओ हर एक गेम में कोई ना कोई चमका रे श्रेया क्या पिंग में दी मफिन डुएलिस्ट अरे बाबा और कैस्पर क्या कंसिस्टेंटली खेली फक वेरी वेल रे सब लोग एवरीवन प्लेड सो वेल रे इंडिविजुअली मजा आ गया मजा ही आ गया Thank you. वेल डन Thank you so वेल much. डन Thank रे you, Eupho. वेल डन रे दृष्टि And बहुत अच्छा also, खेले सब लोग Euphoria, thank you so much for joining the watch party. It means अरे Yeah, यार, it really Yes. means a lot. Like Yeah. हम लोग को इतना exposure मिला and you know we also got to show our skills. It really means a lot. Thank अरे you so much. I was watching it ऐसा ऑफलाइन में मेरे को पता नहीं था कि you know we can like we are allowed to do it or we can do it फिर I saw कि people are doing it fuck it dude मैं देख ही रहा हूँ तो फिर why not let's watch it with people only I actually don't know about it because I'll talk to you about that later, okay? Yeah, चलेगा। I think you're already I streaming. have my right? interview now with FSL people on Go, qualifying go, for go, go. elite. So I'm off. Okay. Bye 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 bye. well done guys well Bye done bye. bye bye guys congratulations and well done रे well done Thank you. you Thank made you all of so us proud much. you guys made all of us Yay. proud Yes, done रे yes. Thank you. It's an emotional moment. For well us. done रे Casper well done Thank you. बहुत बढ़िया खेले रहे ये लोग बहुत बढ़िया खेले बहुत ही बढ़िया खेला है बहुत ज़्यादा प्यारा खेला है बहुत बढ़िया खेले रहे ये लोग सुपर वेल प्लेड अमेजिंगली डन रे अमेजिंगली डन वेरी वेल डन रे बहुत अच्छा किया देखा रे मैंने देखा इट इज़ अ सेंटीमेंट मतलब सेंटी होने का ही चीज़ है रे इतना मेहनत किए रे ये लोग इतना मेहनत किया कैस्पर मियाओ मफिन श्रेया सब अमेजिंग बहुत अच्छा खेले इंटरव्यू लगा रहे बच्ची लगा रहा हूँ इंटरव्यू आने वाला है क्या अभी या लेट डिले में आएगा वो अबे वॉच पार्टी बिना पूछे कर दिया भाई सिग्मा मेल भाई हमारी देश की सब वीर योद्धाएं गेम खेल रही हैं ना डरने का नहीं भाई 3-1 score what a game यार can VLT make an appreciation post 100% already on its way बोल देता हूँ नो प्रॉब्लम ना तो फिर सही है पोस्ट कर रहा हूँ अभी मफिन लूप या और क्या है कैस्पर कैस्पर का इंस्टा आईडी क्या है नाम भूल जाता हूँ मैं कैस्पर इधर फॉलो करता हूँ मैं इसको द गर्ल यू लुक फॉर बाबा ऐसा कैसा नाम है द गर्ल यू लुक फॉर द बॉय यू डोंट टॉक अबाउट या मफिन और बृष्टि का क्या है ब्रिटसी मिल गई वेल डन सुपर प्राउड रे सुपर प्राउड वेरी नाइस फक मैंने दूसरे आईडी से कर दिया रे फक चलो कोई नहीं दूसरे आईडी से वापस से करता हूँ क्या सीन है मैंने अपने दूसरे आईडी से कर दिया रे गलती से कोई नहीं दोनों आईडी से शाउट आओ
वेरी वेल डन रे। 3-1 जीत गए रे। इंटरव्यू चालू होगा कुछ देर में। 7 मिनट है टाइम अभी। क्या कर रही है लोग? मजा आ गया भाई, मजा आ गया एकदम ऑन पॉइंट। डालो ये दुनिया पिघल गई, ओ बेबी डाल में सोने दी, ओ बेबी डाल में सोने दी, ओ बेबी। अरे तू कर नहीं रहा यार, तू कर नहीं रहा। अरे डिले है रे। अरे डिले बट Oh my. मजा आ गया। What a dance, bro. Thank you for proving everybody wrong. Thank you for proving yourselves right. Thank you for putting in that work. Thank you for telling every girl is equal to every other man. Thank you for taking all of our whole nation up against the flag. I know Casper and Mia have done it in the CSGO days. The Maheshwari ban raha hu, chalega bro aaj. So thank you for doing that. Thank you Akali and Dead Zone for always being there when they needed the most. Akali tera bhaiya ko hi bol de piche. And after that Ben Ribo, even though apart from college whatever you did for them is amazing. And I really want to thank Shreya for Amazing introducing me रे। to this amazing group. बहुत बढ़िया। Insane रे। Insane रे। Insane किया रे। Insane किया। Insane। पूरा अवार्ड शो बना दिया। Insane bro। वाइटलिटी को हरा दिया भाई। नहीं अभी तक नहीं राजर्षि। इंजेन रे। ऐसा लग रहा अपनी टीम है। अपनी तो टीम है। अरे मेरे दूसरे अकाउंट से क्या हुआ? अरे इविल कर्मा, मेरा ये अकाउंट जो है ना यूट्यूब का, जो मेरे अभी ब्राउज़र में खुला था, दैट इज़ नॉट द अकाउंट आई यूज़ टू वॉच माई फ्रेंड्स स्ट्रीम और एनीथिंग। वो दूसरा अकाउंट है मेरा एक, मैं अपने मोबाइल से जिससे देखता हूँ। दैट इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट। काका का क्या सीन सब? साइफर या सेज से शुरू करो तुम दोनों। भाई बेचारा अभी भी रैंक पुश कर ही रहा है, उसमें भी हिम्मत है। प्लान में गुड पिंग एंड पीसीज एमसीबीजे नहीं रहे, ऐसा कुछ नहीं। आई होप दे गेट स्पॉन्सर्स आफ्टर दिस। आई एम प्रीटी श्योर they'll get acknowledged. मैच इंटरव्यू होगा ना, खेलेंगे। दे आर मूविंग इनटू अ हाउस टुगेदर सून, तो लैंड्स वगैरह सब होएगा सून। अमेजिंग सीन। अमेजिंग सीन। जारवीएस ये किसकी आईडी बूस्ट कर रहा है? खेल रहा था ना अन्ना के साथ, तब कल वाली आईडी आई है। लाला वाले आईडी से इंटरव्यू उनका वहाँ पे देखना, इतना कंटेंट वो नहीं करना है मेरे को। इट्स अलाउड बट देन यार ना, व्हाई डू इट मोर देन नेसेसरी। What a game रे, what a game, what a game. चलो ब्रैंक ग्राइंड स्टार्ट। यस ही विल। Twitch FSL chat is also super nice. Yeah, they were really good रे, I saw. Super helpful. Give them your bootcamp to practice when your events end. You can do that. We can talk about it for sure. देखते हैं, अन्ना से बात करता हूँ. We can support them in any way. I'll have a talk.
क्या मस्त मस्त स्किन्स आई हैं रे, ये भी लेने लायक है। लाला वाला अकाउंट पुश करते हैं। ये वो गेम था क्या भाई? मेरे में कितने हाई रैंक प्लेयर्स आते हैं रे गेम में, कैरी करना पड़ता है। लाला बना दूं क्या इसको भी डायमंड 3? 2-3 अकाउंट डायमंड 3 के पास है मेरी। एक डीएम करता हूँ। मैच टेस्टी सुप्रीमेसी देख रहे हो? डेडिकेशन स्कूल से बंदे आकर बोल रहे सीएस का पेपर की पढ़ लो, मैं इधर हूँ। सही है भाई। वैंडल की बेस्ट स्किन कौन सी है? आई लाइक प्राइम अलॉट और एल्डर फ्लेम, पर्सनल प्रेफरेंस है। चड्डी आप कौन से कलर की पहने हो? डेथ मैच आपकी पसंद की, वैसे स्किन भी अपनी पसंद की ले लो, चलेगा। सैलरी नहीं आया अभी। खाली हेडशॉट मारता है ये गन। यूफो टॉक्सिक ऐसा क्या भाई? ये एक बैटल पास लो, ले सकते हो। इट्स गुड, इट्स गुड ओनली, आई लाइक इट। व्हेन इज द नेक्स्ट मैच? पता नहीं ग्रैंड फाइनल्स कब होगा। ये तो लोअर ब्रैकेट फाइनल्स था, बोलो अभी तो खेले। सलमान बॉय अरे नीचे से निकल गया। थैंक यू गुप्ता। दे क्वालिफाइड ना फॉर दैट। थोड़ा सा डीएम कर लो फिर सीधा गेम चालू करता हूँ। इतने देर से बैठ के देख रहा था ना। ट्विच में कौन सा लैंग्वेज मैं बोलता हूँ? इंग्लिश, हिंदी? अब में लैंग्वेज सेम ही है भाई। ट्विच बोल के लैंग्वेज बदलते हैं। There is no final for this. They qualified for LAN. देखो पता नहीं है स्ट्रक्चर FSL का। कैसे मिस होता है भाई? फैंटम का समझ में नहीं आता रे डैमेज। गिल्टी वर्सेस 108 o'clock। थोड़ा एम यहाँ भी सेंड कर दे, मेरा एम नहीं हो रहा। मेरा भी नहीं हो रहा था अभी। हक दिया रे। चलो गेम खेलता है। टाइम टू प्ले सम गेम्स।
आज फैंटम डे है, ऐसा कुछ नहीं है। कातिल कबूतर वेन नॉट एनी टाइम सून ला। ट्रॉली ली M4 to Sam competitive. My god, is he coming to Radiant? अनुज भैया के रैंक के पास जाना है मेरे को, फिर अनुज भैया के साथ मैं रैंक पुश करूंगा। You can make aim guide, I guess vlog से अच्छा यही कर ले। इतना भी अच्छा एम नहीं है मेरा, मत डाल रहे वो रुमाल नॉर्मली अच्छा दिखता है तो। ले हटा दिया। some games before TEC Finals at 6 p.m. So versus VLT. Spectrum Phantom, it's good actually. It's actually good. हक दिया पिन। अभी ठीक है? मैं हक रहा हूँ। थोड़ा। फाइंड जेट लेना पड़ेगा क्या? Sorry bro, you're a bit late. लाला मेरी माफी कंगन वापस कर लो तू। बात करूँ क्या? लगी यूफो? हाँ पता है, गेम मिनिमाइज था उस टाइम पे। जी नहीं जा पा रहे था ही, पता है, सुना मैंने। मुंबई का टॉक्सिक लेवल। टुडे वी लॉस्ट कुरामा इन एनीमे फील्स बैड वी में से क्या? ओ बोरुटो में। यू शुड प्ले ब्रिम। नहीं रे, हाई रैंक्स में इंस्टॉल होते हैं क्या? नहीं होते, लेकिन ये मुंबई सर्वर है, यहाँ पे एजेंट लॉक नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा आपको, ऐसा सीन है। यहाँ पे इंस्टॉल लॉक करना पड़ता है ज़रा, चाहो या ना चाहो। अपनी तो दिल का पता दे, चाहूँ मैं या ना। वॉइस चेंजर यूज़ कर गेम में एंड गेट सम क्लिप्स। ऐसे ठीक है। आप यूफो जैसे क्यों साउंड कर रहे हो? क्योंकि पता नहीं, वो रास्ते से जाते ही ना माइक में एडवर्टीजमेंट कर, जैसा माइक है स्वीटो का। मुंबई सर्वर में मत खेलो प्लीज। मैं नेक्स्ट आई जील, ठीक है। मैं लेवल 28 हूँ और ये सब 200 लेवल वाले नो लाइफर्स मिल रहे हैं मेरे को। मगलून आया है सामने। अपने तो दिल का पता चाहूँ मैं, इतना बता दे मुझको, चाहत में अब भी उसको यूं तो नहीं इख्तियार। फिर भी लगा हूँ सोने, तू जो लगा है मिलने, अब तो नहीं एतबार। माँ की कंगन पहले वापस। ओ कंगड़ा तेरा वे। एंट्री बाजी करनी है। क्लोज राइट है, क्लोज राइट। स्काई फ्लैश कर। सेज वॉल के पीछे, सेज वॉल के पीछे। भाई प्लांट ले ले।
You all. रहना you all. अरे एक हेवन से पड़ा, लो वाला मर गया बंदा। 1 heaven 1 halls. One enemy remaining. इधर लेफ्ट में ही है, पॉकेट शॉट। अरे आरिश थैंक यू। इतना गंदा गाना मत गाया कर, ठीक है भाई मेरा भी शॉट तो मस्त था। थैंक यू यार, बड़ा शॉट। आरिश क्या मेरे को वो शरीफ देगा? नहीं भाई नहीं दूंगा मैं। थैंक यू। मैं स्ट्रीम कर रहा है कि नहीं पहले बता। कर रहा हूँ। कर रहा है पहले ले चल। वाह क्या सीन है। कुछ और मिलेगा? और दे दे, पैंट भी खोल अपनी। चलो भी चल रहा है। ऐसे कॉल ही करेगा मैं। अब भी चलो कोई ना कोई। लेफ्ट साइड मरेगी। टीपी एक और केजे भी है। राइट साइड खुल रहा नहीं है। Remaining. स्पेक्टरलेस थैंक यू। कहां लॉन्ग अरे VLX का प्लेयर है आरिश, बढ़िया प्लेयर है। आई कास्टेड देम ऐसा क्या? ये सही है। इतना टट्टी जो ठीक है भाई, ठीक है। कोरोनिया F क्यों लिख रहे हो भाई? 2 शॉट्स मारे मैंने डीएल से, ठीक है। ऑड्स बोलती F किस बात का चल रहा है चैट में, ये नहीं पता। तेज का वॉल है शावर्स में। मैं एल्बो पे फ्लैश कर। मुझे लग रहा अपना बंदा शावर से गोली चला रहा है। असुन ओमेन 130 टैग है बैक साइड। बाइक लेके भी आजा, केजे चला गया। नहीं ला सकता, चला रहा है। ओमेन पे आर्मर नहीं है, हील है। अब आ गया वापस किल में। इधर आया होगा साइड होगा। साइड पे ही है वो, सिटी नहीं है। मत देख रहा है जेट देख रहे हो। सीट लास्ट Last player standing. लेग शॉट बट वी टेक दोस। अटैक था बे वो। जंप कर रहा था रे वो, कोई नहीं, राउंड तो निकाल लिया। वही तो ना, मस्त था इसलिए तो बोला। यार शॉट मारा भाई। क्या सीन है भाई? मैंने क्या रिस्की शॉट लिया था रे वो फिनिक्स पे, वो डब्बे पे खड़ा हुआ था मेरे शॉट पे भी। लाला कमेंट्री ड्रॉप दे। क्या चाहिए भाई? ए स्मोक करो, ए फास्ट जाते हैं। यू फोन फायर भी दे हम चारों शॉट। बॉम्ब ले जाएगा, मैं पावर आ जाता हूं जेट के। डॉगी करूं। बन जा डॉगी। मैं शार्प देख रहा हूं। बैक साइड स्लैश कर रहा हूं। ओ शावर शॉट गन है। बड़ा फ्लैश। हो सकता है। सीटी देख रहा हूं, सीटी आउट देख रहा हूं। ठीक है मैं यूएल देख रहा हूं। मैं स्टिम बीकन स्प्रे कर रहा हूं। One enemy remaining. हेवन हो सकता था। लाला रिप्लाई तो कर। क्या निखिल, अबे यूफो आर यू प्लेइंग इन टेक? नहीं भाई, अभी तूने मैसेज किया, थोड़ा प्रोसेस होने में टाइम देना। 10 सेकंड 15 सेकंड। गेम चल रहा है, समझ रहे हो? गेम खेल रहा हूँ भाई। कुत्ता कर रहे वापस इसका। बन जा कुत्ता आरिश। बस कह दे तू हाँ तू जिंदगी तो दिया शॉट वॉल मेरी।
मन को बाज ओ शावर वाले शावर बॉक्स के ऊपर 131 रेज 131 रेज 131 अरे एकदम कॉर्नर पे रे यू ऑल मॉली कौन किया अरे player standing मैं मार देता था राइट वाले को रेज 1 एचपी है लैंप पुश करके मारा रे उसने मॉली मत कर रहे उधर यू ऑल कंट्रोल लेना है थोड़ा साफ है ठीक है ये किसकी आईडी से खेल रहा है मेरी आईडी है ना लाला कॉल कर दिया रे अरहम बिक्कान व्हाट्सअप अपनी आईडी से खेल रहा हूँ हेलो धर्मदीप फास्ट बी चलना है या ए चलना है क्या तेरे अल्ट पे एक होल अल्ट मार सकता हूँ ये होल मार दे मारता हूँ ये दे मेरे को शरीफ दे भाई मेरी जान मैंने तुझे खरीद के दिया यार अल्ट पे जाऊंगा मैं डॉगी कर रहा हूँ उसके बाद वो अल्ट मारेगा उसके बाद जाना ठीक है पहले डॉगी कर उसके बाद अल्ट डालियो झटके में उसका नेड आता है रुक जा तमाम तुम लोग को शावर्स फास्ट आना पड़ेगा लेकिन रेना और वाइपर थोड़ा टाइम ले लो आराम से लेना जाओ उनके साथ जा कर रहा हूँ दीवार का मरा निकला है वो हक दिया मैंने चलेगा यू ऑल आ सकता है वापस मेरा गन ले ले शॉट पे गन है एक हेवन कूदा हेवन नीचे डबल यू एक शॉट है अरे शॉट से मार रहे भाई एक तो फाइट लो बैशर तुम लोग क्या गड़बड़ कर रहे हो रे इधर 2-3 बंदे कैसे सो गए अपने टायर्ड हो गए कोई बात नहीं भाई उस वाले को मार रहा था उधर गोली मारी उस वाले को मारने लग गया तो हक दिया कोई बात नहीं तूने मुझे निखिल रेड्डी तूने मेरे को पहचाना क्या मैं बिंग्स का फ्रेंड हूँ अरे निखिल भाई आप तो गाइस डिफॉल्टिंग टाइम स्टार्ट हो गया निखिल भाई मतलब निखिल भाई अभी अपन गए थे जो लोनावला वो वाले निखिल भाई हो आप ओ भाई क्या हाल है निखिल मियां हेलो स्पॉर्की भाई वो क्यों कैसे शिट आई डिड नोटिस कर रहा है तू कोई तो बोला कि ऑल हो सकता है तो वो क्लियर नहीं करना है क्या बता दो मेरे को नहीं शॉट देख कोई नहीं चिल गाइस एक राउंड गया रो नहीं कॉल ही मत कर बस उधर चल तेरे फ्लैश लगेंगे आगे चल हाँ कोई तो मर्द बने आजा मिल जा था ये टप ड्रॉप क्लियर है कभी पे स्टन हुआ कुछ भी स्टन हुआ गलत कॉल अरे फ्लैश भाई गंदे कॉल में इतना एग्रो गया स्टन का कॉल सुन के वो मेरे कुछ नहीं था वो नहीं भाई मैं स्लो खेल रहा हूँ झूठ बोला मेरे को बड़े अच्छे से लुक दिखा रहे हो तुम कैसे हो सब बढ़िया रीड कर लिया ब्राउन हो जाएंगे पानी की तरह कुछ रीड नहीं किया अब मैं उनको गूगली दूंगा गलत खेले रहे अपन गलत कॉम्स फ्री किल खड़ा है उसको मैक का रिलोड था तू फ्लैश कर रहा है मेरे को चुनावला में क्या मस्ती की बहुत मस्ती की आपके पास कौन सी गाड़ी निखिल भाई कंफर्मेशन के लिए बताओ अरे मगलून नहीं मरा राका के लिए रिस्पेक्ट प्लस लेकिन उससे रैंक पुश नहीं हुआ बेचारा आयरन 1 से ब्रोंज सिल्वर ला पाया बुरा लगा रे बाबा कॉपी उठाना पड़ा इसी के शॉट्स कनेक्ट होंगे हाई चैट फेक है ये मेरे को भी लग रहा है पूछ लूंगा निखिल को मैं last player standing spike down A One down. Found one.
आज तो भाई 72 लाख ने वाले हैं भाई, मतलब Let's get these idiots. चलो अब खेलते हैं। तो भाई इनका भाई नहीं आ रहा फिर। हमारा इकोनॉमी कब सेम होगा? जब बाय राउंड में तू शेरिफ आर्मर लेना बंद करेगा। मेरे पास पैसा नहीं था उस टाइम पे ब्रो। अरे हम पे था ना, तो स्पेक्टर ले लेने का तब। एक ही बात है, मैं पहले थोड़ी पिक हुआ कि मैंने शेरिफ लेके थ्रो कर दिया जाके। रेड पे मरा हूं मैं। शेरिफ इज आल्सो नो। टैग क्या कोई टैग क्या? नहीं नहीं। ओमन को दो शिफ्ट वॉक आ रहे थे, समझा नहीं प्रोविजन। इट इज आई इन कैपिटल परशवा ऑलरेडी। चलो एक्सक्लेमेशन फोकस इन द चैट। Kill their omen. Gun here. रुक के जाना, आजा स्पाइक लेके आजा। ब्रो आ सकता है क्या? अच्छा नहीं आ सकता, हम जाता। Got the spike. Enemy spotted me. Hawk out. Reloading. 30 seconds left. Spike planted. Last player standing. Kill my allies. उनका रेस गया। Launching smoke. चलो फोकस। इसका मतलब मैं सीक्रेट्स बोल नहीं सकता हूँ, ठीक है। चलो 4 राउंड निकाले थे, फिर एक भी राउंड नहीं निकाला। Race it to the spike sites. बैड। सोवा तो नहीं है ना, शॉट मार लिया। थोड़ा यूटिलिटी वेट आउट करके एक साथ रश करेंगे तो ही हो जाएगा, लेकिन हो नहीं रहा। ज़्यादा कमिट कर दे रहे हैं हम लोग साइड में। 5 राउंड नहीं निकले इसलिए। तुझे एक खेल रहा है वो, मैंने पे है लेकिन परमानेंटली। एक लॉन्ग है। नाइस वन रेना। नाइस हिल चाहिए, ठीक है। वापस आके बी कमिट करना है तो कर सकते हैं साथ में। आजा सब जाते हैं। तो सर डिफॉल्ट करते हैं ना, हुक्का से थोड़ा ड्रॉप किया। थोड़ा और इन्फो लेते हैं ना, फिर अटैक करते हैं। एक हुक्का से ड्रॉप हुआ। मेरे पास शावर्स का कंट्रोल है। डेड या एक बैक साइड है, पॉपिंग बैक साइड। इधर है, किल जाए ए पे। ओमेन भी इधर ही होगा, चले जाओ। बी क्लियर है। क्लियर है। बिलोंग का प्लांट करो। हाँ बिलोंग के लिए। हां देख फ्लैश तो मांग ऊपर प्लांट। बिलोंग आ रहा हूं। फ्लैशिंग रेना फ्लैश कर रहा हूं स्मोक के बाद। बॉट मरा कैसे नहीं एक गोली में? डी पे आवाज निकली है उसकी। दोनों सिटी आएंगे मेरे ख्याल से। केजे और ओमेन दोनों है। ये पकड़ के बैठा है क्या पूरा? 1 enemy remaining. मरा नहीं वो बॉट लोल, वही ना। कैन वी गिव रिक्वेस्ट कोचिंग अनुज भाई कोचिंग? वी कैन सी, देखते हैं अभी क्या है उन लोगों का। हम लोगों के एंड से कोई हेल्प कर सकते हैं हम लोग तो वी विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प देम। नेड आया। ए शॉट हुक्का क्लियर है, हुक्का है।
वॉल क्या है इसकी टैट। I got the spike. क्या हुआ कमिट कर रहे हो क्या? यार ये आए हुए हैं यहीं पे एग्रो। एक फ्लैश करना पड़ेगा स्काई तुझे। क्लोज है पक्का। क्लोज टावर क्लियर है। Hawk out. Wall up कर। Hawk out. Blinded. वो क्लियर हो अल्ट किया यूहो। Spike down A. हेवन देख रहा है अपना जेट, हेवन देख रहा है। हेवन देख रहा हूं। बैकस्टेप है क्या? कोई देख रहा? शॉट देखो एक्सेप्ट देखो कोई। बैकस्टेप देखो कोई। जा रहा हूं। You should run. स्टेज हेवन है। मेरे पे लाइन अप नहीं है। अल्ट करा फिनिक्स ने। मॉली करके जाना। यूहो। ठीक है। मॉली है बॉम्ब। यार बहन चोद। Stay down. One enemy remaining. मॉली डे गैप में आएगा। Last player standing. नाइस रे। व्हाट अ लक। मॉली किधर था देख। ओ भाई मॉली फेल था। कैलकुलेटेड मॉली भाई। फेल मॉली। टैग भी नहीं, मैं टैग भी यही रीजन नहीं किया था। 78 टैग और मॉली उसके स्मोक के पीछे ही सब कैलकुलेटेड था। हां पता है राखा को रुक जाना चाहिए इवन आई थिंक। नहीं करना चाहिए इतना हार्ड पुश। Thanks. एक साइड ले लो वाइपर का अल्ट मार दो। चलो बी फास्ट करते हैं। हुक्का खेलते भी नहीं, बस लॉन्ग 3 जाओ। मैं डॉग नहीं कर रहा हूं। स्काई अल्ट खोल। स्टार्ट ऑफ द राउंड खोल दे। अल्ट खोल। अरे राम। Enemy down. सेज के पास ऑफ है। एल्बो गई है जो। मैं लॉन्ग जा रहा हूं वापस। नाइस ट्रेड रे। सीटी पुश करे तेरा मैं वो साइड। Last player standing. कोई हेल्प कर दो। Spike down B. ना माइंड। ऑपरेटर डिफ। स्पीकर से एडवांटेज रहता है उस एंगल पे। क्या मारा उसने? एंटी। अरे वाइपर तू अल्ट क्या कर रहा है भाई? एक किल पे अपना एक बंदा। बचा के रखो। Switching sides. Ready. बढ़िया भाई। हमारा प्लांट एक अब सीट डिफेंस पे क्यों नहीं हुआ? पता नहीं। एनीवेज अभी बी हैवी खेल लो। मेरे को और स्काई को छोड़ दो ए पे। बस आप लोग तीनों भी खेलो मेरे को लग रहा। एक बंदा एक मैं भी खेल लेता हूं। स्काई तू स्वैप कर ले, मैं यहां पे मॉली कर लूंगा अगर आ रहे तो। चलेगा। हाँ तू अपने फ्लैश से ना बीलोंग या हुक्का का इन्फो ले ले। हम लोग फिर हार्ड रोटेट कर देंगे। हुक्का में खेल रहा। वो बुम्बर इजी वाला फील आ रहा है। इजी का फील आ रहा है। ओहो आया बम्बर तोड़ के ले। मैं बी लॉन्ग पे फ्लैश लेके देख। ये मत करा, ऑन मत कर उसका। बी का गेम है क्या है? चले जा रोटेट कर ले। Spike down B. मॉली डैनिंग पुश नहीं करेंगे। बस बहुत बढ़िया 5v3 है। बहुत बढ़िया गाइस। बैठा रहा। बी लॉन्ग छोड़ लॉन्ग स्मोक किया। डबल पिक करते हैं। आजा हुक्का पिक करेंगे। आजा। हाँ वो दोनों लॉन्ग है। मैं देख लेता हूँ साइड। शॉट से आ सकते हैं। मैं नहीं देख रहा शॉट। मैं टीपी का वेट कर रहा हूं। वापस लिया उसने यहाँ से। उसका ऑफ हुआ। वो ये बिलोंग है शायद। बिलोंग है। केजे शायद बिलोंग है। मैं टरेट टीपी का वेट कर रहा हूं। हाँ फिनिक्स टीपी के बाहर है। फिनिक्स बिलोंग पे डीगल है उस पे। अबे दोनों ही हैं दोनों। One enemy remaining. लास्ट टीपी। डरा दिया उसको मैंने। चल भाई मैं चला। ओके रे प्रोविजन टेक केयर। The last thing they'll see before they die. Lucky. एड बोरूटो एपिसोड बना दे। मजा आया यार। तो जा घुस जाऊंगा उसके अंदर और पीछे से लूंगा उसको। उसके मुंह पे ही लग गया। मैं चिपक गया। अभी ये हैवी कर राका का इस बहुत अच्छा सही है। तू खुद भी बोलेगा देख लो टीम के बाद देख। लेके आया तो कवर दे। ठीक है
ए शॉट स्मोक कर रहा हूँ Spike. Spike down A. One enemy remaining. गाइस ये लास्ट वाला लर्न करेगा गाइस मुझे ये शॉट के स्मोक में छुपा है ऐसे क्यों लग रहा है पॉसिबल है मेरे को लग रहा है सिटी से आएगा बीच पॉसिबल है क्रॉसर 1312 मुझे दे दिया बंदे ने ऑल्ट F4 दबा दिया होगा लिखा हुआ है ना 1312 है क्रॉसर से कहीं तेरा एक फ्लैश डालना ये इधर हुक्का के बाहर मैं स्विंग करके आऊंगा तेरे फ्लैश पे बाकी रेना बिलोंग खेल सकते हो नहीं हो जाएगा ज्यादा नहीं दोनों कंट्रोलर एक साइड खेलेंगे तो तुमको स्मोक नहीं मिलेगा सुन डायरेक्ट पिक ले मैं फेक नहीं तू फ्लैश देना ऐसे फ्लैश दे देता ठीक है घुमा दूं क्या फ्लैश या हां घुमा के कर प्रोटेक्ट कर साउंड्स मॉली गया तेरे पे अभी ये शॉट आ रहे हैं रेना फायदा नहीं है One enemy remaining. Spike down A. आओ ना रे गाइस पुश करो ना मैं आ गया पॉसिबल है कि शावर है कार के बाहर हो सकता है आओ ना तुम लोग डर क्यों रहे हो मैं ए शॉट पुश कर दिया स्मोक पुश नहीं कर रहा है ब्रिमान ना तो हम लोग डिसिप्लिन्ड गेमर्स हैं बे अरे बाप रे बाप ऑफ ले लो मेरा ऑफ ले लो ए शॉट से फाइनल है मैं ऐसा पुश नहीं करता ऑफ ले लो हां ठीक We got this. अरे बाप मुझे इंडिया का 40 बोलता है पता है इतना डिसिप्लिन ठीक आ जा इंडिया का 40 अकेला अरे स्काई वापस से वो वाला फ्लैश करना मैं montage कर नो montage bro what's up Labansh thank you god bless you guys belong walking on the एक राइट है अबे उसका बाय क्यों नहीं है क्लासिक है बे आना दो शॉट डीपी Headshot. One enemy remaining. लास्ट ए शॉट Hawk out. गाइस इको फ्रैग से पुश करो या डिसिप्लिन कर ले डिसिप्लिन ऑस्ट्रेलिया चलो डिसिप्लिन वाली ऑस्ट्रेलिया फुल डिसिप्लिन बोलते हैं गाइस स्मोक स्पैम करता हूं मैं कुछ नहीं करता बहुत बढ़िया है ऑस्ट्रेलिया है रे तो पूरा कहां से 40 बोला था मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं तू ऑस्ट्रेलिया है भाई आजा स्काई वापस आजा जब तक एक बी पे पिक नहीं मिलेगा ऐसे ही इधर ही पुश करूंगा मैं नहीं ना तू ये राउंड ही खेलेगा रे ना ये राउंड ही खेल ले और रायना खेल ले तू एक रेना काम नहीं है भाई तेरा कुछ इधर जा Cheers, mate. अरे रेना ड्रॉप दे दे Chill out, would ya? सुन कुत्ता कर सुन फ्लैश मत कर कुत्ता कर मेरी सुन कुत्ता कर फ्लैश बार कर रहे हैं और तू स्विंग मत कर भाई मैं अकेला डैश कर लूंगा तू जिंदा रह प्लीज रेना एफ के हमारा ओ मैं इसकी ये कितना जल्दी है फ्लैश आया बे कूदेंगे एक लॉन्ग भी था एक है मगलून है वो अकेला Smoke's down. ऑल बैक ये जा रहे हैं एक है डिसिप्लिन चला गया गाइस अब जी गाइस हार गया मैं नहीं ये जा रहे हैं वो शॉट आ रहे हैं जा रहे हैं इस साइड प्लांट हो रहा है 2 शॉट है Spike planted. Beacon here. Raise there. आरो फ्लैंक आ रहा है चल मार दिखा तेरे सामने ब्रिम लेफ्ट में डिफॉल्ट ब्लाइंड है Last player standing. फुल डिसिप्लिन वाली बोलते हैं गाइस नाइस ऑफ ले सकता है तू मार के इधर ही हुक्का में टीपी करके जा स्टेज पे था ना अच्छा ले बढ़िया पैंडल ले लो नहीं रे वो वैंडल स्किन किसी पे है
I will not play Minecraft. I don't like that game. कहाँ से आते भाई एस्ट्रालिस? कोई नहीं relevant. Nice one. यार उसने लेकिन अच्छा पकड़ा रहे अपने को स्काई. ऑफ देना. अरे मैं ओमन के फ्लैश में घूम रहा था. और मैं डैश आउट भी ऑफ रे रीना. अब मैं यहीं पे ऑफ करूँगा. वाइपर तेरा स्पून डाल रहा है यहाँ पे. वन वे. नहीं इधर नॉर्मल. एक मारा तो इसमें. तू इधर खेलना कभी पे. मैं इधर हूँ ना ऑफ लगा रहा हूँ. वो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे तुझे कभी. टावर देख ले बस. ये बी का गेम है. वाइपर तू भी इन्फो ले ले शावर्स का. हुक्का साउंड्स. आ रहा हूँ रोटेटिंग. टू हुक्का चल हुक्का के अंदर बैठा हो. पुश किया. दो बंदे बिलोंग थे. बहुत टैग थे वो लोग. One enemy remaining. बहुत लो. Discipline guys, discipline. Nice shot. Not discipline guys. 87 टैग है. उसका हाफ आर्मर है. बॉम्ब नहीं है उसमें. एल्बो मार. हां सही है. क्या समझ रहा है? ये ले ओमेन का स्प्रे दिया. Match point. यूफो मेरी जान चिंगम फ्लाइंग चुम्मी टू यू. गाइस लाइक कर दो. क्या ओमेन का गाइस इसको बोलते हैं कंट्रोलर ड्रिफ्ट. ओके मैं ओमेन खेलता हूँ फिर भी ब्रिमस्टोन खेल रहा हूँ. ओह माय गॉड. जॉड हो क्या आप? जॉड हो तो बोलते छपरी मारा पे यार. रायना आप कोने में जाके बैठो ना उधर वापस. Here. Keep up. इधर सुरेश रायना थोड़ा बॉलिंग करो भाई. Joke's over. You're dead. Enemy spotted A. अरे मार दी उसने आरएनजी. Last player standing. एक शॉट एक बी. डब्लू करते हुए. हाँ they are going B only. Spike planted. ये राउंड निकाला ना तो तुझे मस्त बीवी मिलेगी. उस पे है ऑलरेडी. तू शादीशुदा है? हाँ डिवोर्स हो गया बट सैडली इसका. हाँ मेरा ही बच्चा है. ब्रिमस्टोन मेरा ही बच्चा है. अरे ठीक है. One enemy remaining. ये तो तेरा राउंड है. अरे माशाल्लाह. लेट्स गो. मैं बोल दूंगा मम्मी को वापस मैरिज के लिए. डोंट वरी. मिलेगी. लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना वाइपर के नाम पे बॉयज. Defenders win. नहीं चाहिए. थोड़ा सा सही. मत करना गाइस मत करना. What a round boys. Unexpected victory. वो मोटू मोमो सो रहा होगा पक्का. और नहीं भाई. आया सीन है. एक और राउंड और इधर हम लोग बने डायमंड 3. वो आ गया सीन है. सब ऑन कर देता हूँ अभी. क्या बग है? और ये दोनों चमूलो अभी भी खेल रहे हैं. चमूले इमॉर्टल. चलो अभी ऑफिशियल मैच की एक और खेलेगा. एक और खेलूंगा 6 बजे से है ऑफिशियल. एक और खेल सकते. ये पीसी रिस्टार्ट कर रहे. पीसी रिस्टार्ट कर गेम चालू हो जाएगा. क्या स्किन्स आए रे. थैंक यू का मॉनिटर अच्छा होता है. पूछना टीबोन से. एलएफ माजिल के साथ डो क्यों कर रहा है? अमतरासु को इनवाइट किया. वो खेलेंगे क्या? खेले फैंटम.
ऐसा नहीं है बंदा ले लेता क्या मस्त है रे मतलब बेकार है नहीं ले रहा रे पैसे नहीं है उतने डुबाने के लिए इतना पैसा नहीं है 8 में टॉप 8 लॉक हो गया बिना है नहीं खेलूं क्या ये एजेंट या स्मोक्स खेलूं कंफ्यूज्ड हूँ क्या खेलूं You play smokes. I play. खेलता किल जाए स्मोक्स खेल वरना पूरा गेम दर्द है अटैकिंग है ना चलेगा एक्स्ट्रा ये खेलता हूँ कभी खेला नहीं किल जाए ऐसे I used to play Cypher on this map, but चलेगा. Beautiful sir, what's up, CZ? क्या हाल है? खेल के देखते हैं किल जाए सिंगापुर 2 में. I hope these Insta lockers play well. Get a shot at that heart. Take it. Salary for mods. Placing sentry. Recalling my bot. Out of charges. Turret out. Recalling my bot. Turret out. हाँ ये इधर से आउट भी देखेगा इधर का आउट भी देखेगा. Enemy spy B. Reloading. Placing my आउट है इसकी टैट. Last player standing. ये क्या था भाई? नीड भाई ये क्या राउंड था? Killjoy, control your bots. That turret keeps looking at me funny. ये वो लोग ठुकते वाले क्या गंदा वाला?
ने वाले लग रहा है मेरे को, फीलिंग आ रही है। Spike down A. Sentry. I push in. Spike dropped. Turret destroyed. वो 40 HP, I gave him 28. On their server Singapore 2. Last player standing. क्या लगता है guys, ये गेम जीतेंगे? थोड़ा सा भी होप है क्या? मुझे नहीं है। Let's kill that Reyna. Our team's got soul. I want to keep it that way. Hello. Placing sentry. Huh? Together. Need a drop. Thanks. Let's go. I can fight for you. 1, 2, 3. Scanning ahead. Bot coming back. CT. Smoking. Placing swarm grenade. Swarm grenade out. Wait. Grenade. ये क्या फ्लैश है? Last player standing. शांत पे कैसे फ्लैश किया? राइट से ये मेरे को लग रहा है बहुत गंदा आने वाले 13-1 या कुछ। Okay, we know the drill. Stick to your roles and we'll crush it. Duelist strength का लॉक एटलीस्ट घुसता हो। Okay. They rotate way too fast. रुकने वाला है 13-0 हो सकता है पूरा पॉसिबिलिटी। वो लोग चबा चुप देने वाले सबको। We can't keep doing the same things. We can't keep doing the same thing. Turret out. Scanning ahead. Found them. Bot coming back. Help. Wicket. Spike down A. Last player standing. ज़ीना आ रही है उसके ड्रोन से साथ में। नहीं होगा तो डिफेंस में ए सेटअप कर। 13-0 होगा मेरे को तो लग रहा है। Is everyone's tech still working? Double check it, please. Placing sentry. मैं थोड़ा यो खेलता हूँ। हमारे अगेंस्ट क्या एज एन ऑर्गेनाइजेशन मतलब समझा नहीं अगेंस्ट में मतलब पता नहीं कौन। Fire in the hole. I have this fight. Variable removed. Recalling my bot. No. Coming from T-base here. KJ and Reyna here. Go. KJ and Reyna B. So what? So is droning A. Get you all. Placing alarm bot. Turret out. Watching your backstroke. Red planet. Turret down. अरे ये क्या किया ये मैंने गू खा गया मैं भाई गू खा गया सॉरी गाइस। One enemy remaining.
Molly bro, Molly. Left me no choice, kid. Eupho are फिर. वो खा गया. Your stale tactics would only work for so long. Jet and Rina, can you guys enter? Yeah, I can. Wait, EP net, you can wait, okay? Don't fart, okay? That hold. Lord Batura, क्या हाल है? Backside, I'll just hold up. Placing sentry. Bot coming back. Is this Singapore server? Yes. The Wave artist. Placing sentry. No more. Recalling my bot. We can go A. Okay. Placing Go swarm A grenade. now. Swarm grenade out. Razer and Reina. Placing alarm bot. KJ also here probably. When will you rotate? I'm smoking Initiated. Placing swarm grenade. Okay, wait. One minute. Turret out. Kill my bot. Turret down. Wait, don't peek. Last player standing. Now we're cooking. One enemy remaining. Dude, I could have taken this duelist agent and I could have done it so well. Stay in range of my stim beacon, and we'll mow them down. Add a duelist. No, 368 Zowie नहीं मिला. Skins क्यों नहीं ले रहे साथ? नहीं लिया इस अकाउंट में. आप ऐसा नहीं है कि हर अकाउंट में स्किन दो. Guys, can you talk and say where you're gonna enter? You guys took duelists. You don't impact duelists. Two guys here. We can go A. Come here, so come. Yeah, let's go A. Two guys will be. Suva showers. Half HP showers. Dead. I'll smoke heaven. Sound दे दिया. One enemy remaining. Nice one, Jet. Backstep here. By Twitch पे कब stream करोगे? Maybe at night. Let's see. Haven't decided yet. Probably saving. It is. Is it half HP? जेट का ईगो हट हुआ लगता है. चलेगा. स्मर्फ अकाउंट से राका के साथ खेल लो. उसका जल्दी रैंक पुश हो जाएगा और बैंड थोड़ा रेस्ट लेगा. मैंने उसको मैसेज किया. बोला अकेले खेलेगा. देखा ना उसने स्ट्रीम पे भी बोला. मैंने उसको बोला करता हूँ मैं आता हूँ. Reload your mags and let's get back out there. Good round. And drop you if you want, Jet. Or catch you. I'm going wrong. We have a bad economy. Reloading. You join here. Bot coming back. Enemy spotted. Molly. Wait. Nowhere to run. Placing swarm grenade. Swarm grenade out. Wait, they have some grenades. Can't enter the site. Can't enter the site, bro. That bombs them.
Bro, come! Brimstone! Last player standing. Why waiting, bro? Bro, I was reloading. Just chill. Give me a call that is pushing elbow. He's running in front of you. Don't you hear him? Give me that call at least. Arey, how? You don't hear him running? He didn't run. I saw him coming, running and killing me. But never mind. Okay, bro. Let's see. What's that team, man? छुपा हुआ ऑक्टागन में बंदा मार रहा है क्या? I'll try to get orbit shards and then I'll duel. Take the bomb, guys. Prepare for hellfire. Coming back. Smoke's down. One down. One backside. 80 SOA. Nice. Got one. You should run. Let's go B. Okay, go B. No, go on. Placing sentry. One enemy remaining. Nice. Reloading. Okay, go. You could have predicted this. What the fuck is the bot, dude? No more How doubts. you handle VLT team pressure? Just handle it. Hello, Evil Karma. See ya, man. No, bro. I play on default. You want this? Yeah, I want it. I can ult you. I don't have money. That timing पकड़ के गुस्सा में. Kicha. ऐसे fall good रहे. Thank you, Pratha. Okay. Kicha, good. Fire in the hole. Come, boys. Wait. I let you wait. Form hall. Backside. Backside. Bim, you want to do hard. Placing swap. Destroyed. One flank, Reno. Enemy spotted. I'm low. Bomb grenade out. Placing swarm grenade. Last player standing. One enemy remaining. Nice. Oh, my genius doesn't stop in the lab. कैसा है? सब बढ़िया. Alright. Mindfuck Take में back खेल what I said रहा about हूँ. those The bots. game. They're pretty good. Korean jet bottom fragger भाई. करता था. Anyway. Be long ult. I'll go for that. मेरी सर्टी में कोई कॉम्स नहीं कुछ नहीं. ठीक है तरह मर. Revealing area. Placing sentry. Wait, I'm smoking. Deploying drone. Falling backside. Initiated. Backside. Fucking better. 120. Hookah. Cheer it. Spike down B. Spike planted. Right here. Last player standing. One enemy remaining. Nice try. How am I entering before the duelists? My God. Don't take duelists, guys, if you don't know how to use it. Really requesting you.
Not about that. There are other players also, bro. Indian chata! So annoying! Back with racism. अरे मत करो मत. Just gonna mute you. Get carried, stupid. Wait कर रहे हैं इसकी टैक्ट. चिल इट्स ओके. बे घुसे तो सही रे, फर्क नहीं पड़ता रे. घुसो तो सही, एम नहीं चल रहा. अरे तू और बोलेगा तो उन लोग का भी माइंड तेरा भी होगा, क्या फायदा. अब घुस रहे, देख W दबा के. Nice one, Jack. Smoke's down. Hookah. 2 both hookah, half HP. City. One enemy remaining. City. अभी निकले ना कैसे घुसे ये लोग W दबा के. ये चीज थोड़ा पहले कर लेता. Last player standing. Nice. हाँ चलेगा. इनको बोल के अगर ये ऐसे घुसते, अभी देखा ना बोल के कैसे घुसे ये लोग. ऐसा ही ये लोग घुसते ना बाकी के राउंड्स भी, तो राउंड निकलते थे अपने. लेकिन नहीं, इनको फ्रैक्स चाहिए भाई. शेरिफ और टरेट पे खेलता खाली. हेलो इंद्रनील. एंटी कैसे बोलते हैं रे? कुछ नहीं रे, सिंगापुर का सर्वर है रे क्षितिज. ये सिंगापुर 2 या 1 है. और मैं भी इंस्टा लॉक करता हूँ लेकिन ऐसा कॉल नहीं देता, वो सब थोड़ा बुरा लगता है रे. इंस्टा लॉकिंग के लिए प्रॉब्लम नहीं, एटलीस्ट माइक खोल के कॉम्स तो करो. के नहीं है. One enemy remaining. Keep it. टीममेट्स के बारे बोल. एंटी कैसे बोलते रे? पता नहीं भाई. आज M21 को लाओ, गेम में मजा आएगा. ऐसा क्या? Right here. Well done boys. Thanks. टरेट से 35 डैमेज दिया. ओह Zowie लोगो डैम. शायद कि एक एप्रिसिएशन पोस्ट बनाना है एस्ट्रेलिया के लिए. उससे बात करके रोचे से. तेरा भाई किलजॉय खेल रहा है. Alarm bot. Scanning ahead. Fall back. Let them come from hookah. Recalling my bot. Watch B long, please. Smoking hookah. मरने के लिए गया उधर, देख लो. Why? Let them come. I have my turret. Placing alarm bot. Carry. Rina, I will watch your jump. Hello, DJ Hardwell. Shout out to you, bro, DJ Hardwell. Thank you for being a new member. आपने नाम चेंज किया है. City. Razer. One more. Bot coming back. What the fuck did I do, man? I was watching you all. How would I know? Spike planted. Last player standing.
Let them come. Why do you need to push hookah and die? I have my turret if they jump. This aggression was needed during attack. सही है हार्डवेयर. Predict the score. पता नहीं रहा. Idea 3-1. क्या टीम है अभी भी बात नहीं. बहुत गंदी टीम है. Razer का. Enemy smoking B. Wow. He's low, 130. बात ही नहीं करती है. Bitch ass manager. Manuka. Spike planted. I know Raka का. Nice try. Fuck. Nice try. Last player standing. क्या दुखी कर देगी ये टीम भाई. बहुत गंदी टीम है. Nice try. Everyone DJ note down hardware. your observations, then let's run it again. Are you gonna push and die at B? Then I'll play A. Or you want them to enter the site and I'll put my setup accordingly. Go play A, go play A. I will push and die. Go play A. Hello Charles. क्या रैंक पे खेल रहे हो? D3 रैंक अप गेम है ये. Upper rank. Going B. DJ है रे. Spike ऐसी planted. टीम है रे. Enemy spotted B. So I said. Last player standing. The fuck can't you play from site, man? Let them come. Who am I kidding? My knees are gonna kill after this. What's the logic of not rushing during attack and rushing and dying in defense? What's the logic, bro? Imagine playing Killjoy. I'm not even a Killjoy player, dude. I'm a duelist. Look at what our duelists are doing. You know what to do. Our team है रे. Watch this. क्या जरूरत है ये सब बैठाने का? आ जाएगी पब्लिक ऐसे. Just going to double check चले. 2. Enemy spotted B. Oh nice. Last player standing. Nowhere to run. Zowie is 105. खत्म करो रे ये वाला गेम फटाक से. माइंड फक हो रहा है. बात भी नहीं करते, कॉल्स भी नहीं देते. हद है रे भाई, हद है. Spike planted. Revealing area. My smokes can block the enemy's line of sight. Once they're blind, we move. Turret out. कुछ
कर नहीं सकते how it sounds. That is the truth. These guys are so dumb, dude. Again B. Maybe. Come back, sir. Bot coming back. Fire in the hole! Alarm bot out. Prepare for hellfire! Spike down B. One enemy remaining. Placing swarm grenade. Swarm grenade out. Okay, where's Sage? This Scheiße, huh? Shoot the bad guys. How's that for a plan? Placing sentry. Thanks. Bot coming back. Turret out. Safety's off. I think B. Jet rotate. Jet go B. Whole day. No sound B. Okay, There's a smoke at you. He'll double check actually. No, it's B only. If Killjoy is at B, they're B. You should run. Spike planted. Fuck रे कोई इन्फो नहीं भी घुस गया है कितने भी हैं कॉल भी नहीं देते ये लोग ये डायमंड 2 डायमंड 3 है Enemy spotted B. One enemy remaining. Diffuse. Last player standing. Clutch. ब्रिम तू तो कॉल दे दे एटलीस्ट तू बी पे कि बी बन गया है मैं भी रोटेट कर लूँ जल्दी Match point. I'm amped. Let's go. I got things to do. Turret out. Alarm bot out. Let's go. Multiple enemy A. Found them. Bomb grenade out. Turrets destroyed. TP. Last player standing. Spike planted. कहते ही टट्टी Attackers win. फक टीम मिली थी रे गलती क्या रे वही मैं खेलता मैं कुछ नहीं तो हिंदी में बात करते थे Like legit have more entries than these immortal duelists. इस गेम में IQ टेस्ट कब होगा लोगों का कब से होना चालू होगा खेलूंगा भाई
तो आपका फेवरेट एजेंट कौन सा है? अपना मेन किल जॉय नहीं है, फिर भी देखना इम्पैक्ट तो दिया, ऐसा गू तो नहीं खाया अरे बाकी लोगों की तरह। क्या गू खाए रे ये लोग, क्या गू है ये लोग, क्या गू। डबल गू है रे। मत लगा, एक लगा देता हूँ, 6 बजे तक खत्म हो जाएगा मैच है जब तक टीम का। क्या जाने देता हूँ बताओ, बाद में ही खेलेंगे अब रात को। हाँ नहा धो के जाता हूँ टीम के पास बातचीत। काका का क्या हाल है? क्या सीन है राका का? The only real rockstar I know. Thank you guys for the game. क्या कू कहते शायद आय 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 आय। Let's go one more game I think, one more game for silver 2. नहीं यार one more नहीं, ज़्यादा हो जाएगा। नहीं नहीं one more bro. 83. हो गया। Let's go. 83. हो गया। हो गया। रात पे ट्विच पे देख। ड्रैगन स्किन कर लो। Match found. मैच चालू है। दूर रहता है यूफो आऊंगा। अनुरोध थैंक यू फॉर द 100, इट वाज टू मच फन प्लेइंग विद यू। लक टू द फ्यूचर में भी खेल पाएंगे। स्टे फ्रॉम द हेवन वाला मैच। थैंक यू सो मच अनुरोध, इट वाज फन। आई एम रियली सॉरी इफ आई सेड एनीथिंग बैड टू यू ड्यूरिंग द गेम, इट इज जस्ट अ गेम। ना खेलना। हाँ ऐसे की गर्ल्स मचा रही हैं। किसके लिए क्वालिफाई हुए? वीसीटी सॉरी वीसीटी एलीट के लिए हम लोग क्वालिफाई हुए, ठीक है। आज सिंगापुर जाए ना जाए कुछ भी हो, हम लोग ने जो जिस मोटिव से हम लोग ने स्टार्ट किया हम लोग ने अकम्प्लिश किया विदाउट एनी एक्सक्यूजेस। हम लोग ने हगा तो हम लोग ने हगा ही। हम लोग ने सबने हम लोग के फ्लॉज एक्सेप्ट करे। हम लोग ने सब लोग ने अपने मिस्टेक्स एड्रेस करके उनको उनके ऊपर वर्क किया एंड वी क्वालिफाइड फॉर एलीट which might not be the huge thing but for us it means a lot because हम लोग सबका एक ही मोटिव था। in spite of all the odds, in spite of all the trouble, in spite of all the circumstances that came into our way, we did manage to qualify and I just want to say हम लोग में से जितने भी हम लोग ने गलतियां करी है, हम लोग ने 1 मैप हारा, 2 मैप, 3 मैप, जितने भी मैप्स हम लोग ने हारे, हम लोग को जितनी हम लोग गलतियां पता चली है हम लोग राका भाई चौड़ करने वाले हैं। पता है वो 22 घंटे से स्ट्रीम कर रहा है। I'm aware. Tomorrow itself we are not taking any breaks. We are going to work hard and we are going to try our best to qualify. We need to win elite. हम लोग ट्राई करने वाले हैं जीतने का। और एक भी नो ऐसे बोलते ना, हम लोग में से कोई एकदम इजी गोइंग नहीं होने वाला है। We are going to be harsh on ourselves because this is ये मानसी ना हमेशा ऐसी करती है, बीच में गुजराती सुनाई देती है और मुझे लग रहा है कि मैं एलियन लैंग्वेज क्यों नहीं समझ में आ रही मुझे। बट एनीवे एलियन लैंग्वेज नहीं, गुजराती पीपल लव का जो ढोकला फाफड़ा इज लव। मजा आता है नहीं साथ के ढोकला खाऊंगी। अरे ऑफ स्ट्रीम है तो फैमिली रे यस कल ब्रेक में मिल रहा क्या? नहीं कैस्पर ऐसे अरे ऑफ स्ट्रीम मिलेगा ना, ऑफ स्ट्रीम मिलेगा ब्रेक अभी। हां तू अभी रुक ना, अभी बोलने दे ना भाई। Thumbnail jot, thank you. Just muffin things. Muffin supremacy. Thank you Euphoria and It's season everybody Kolkata. Euphoria and a lot of people streamed Bad Luck। मेरे को नाम भी नहीं पता, हम लोग बहुत एंगेज थे ये सब हम लोग के जीतने के इसमें। हम लोग को नहीं पता कितने लोगों ने स्ट्रीम किया बट एवरीवन थैंक यू सो मच। तुम लोग की वजह से हम लोग को कितना सपोर्ट मिलता है यार। यूफोरिया बतूरा यू आर फीलिंग बैड फॉर समथिंग आई डोंट नो व्हाट बट बतूरा यू आर लव। ये ले एग्जैक्टली यार, ये ले तुम लोग की वजह से हम लोग को कितना मोटिवेशन मिला। मधुरा को बहुत प्यार मिल गया। सारी चैट हाइप अप हो जाती है, हम लोग को वो कॉन्फिडेंस यो सचिन भाई इवन इफ वी आर
watching a day after हम लोग को मिलता है वो confidence कि हाँ All the very best for the finals. Thank you so much, Gaurang. वो अपनी strength मिलती है. Thank you so much guys. हम लोग को बहुत ये सबके तरफ से मैं thank you बोल रही हूँ. Muffin supremacy. Muffin को लेके आता था. आने दो उधर. बतूरा बस है. We did go and check the stream in the middle of our games to see how you guys are hyping us up. So yeah, so every one of us was keeping an eye on the chat, and also thanks to Batura for doing it. भाई असली यूफोरिया ना मॉड बना दूं? Fortunate that you came in at certain points when मॉड बना रही हूँ असली नहीं रहेगा तो मुझे बाद में बता. अच्छा रिमूव मॉड आ रहा है ऐसा क्यों? We had no time to spare because we were constantly thinking of how to win. You're now a moderator. Oh my god. You might Ready for the finals, huh? Na? But like there is no grudges from us. Hello Bings. Hello Bings. Bings आ गया. How can you miss? अच्छा Bings असली हो क्या? हाँ इधर तो ठीक है. चलो. You are like family. इधर टेक्स वाला. इधर तो टेक वाला सीन. And you know कि आज तक हम लोग को फीमेल्स को सपोर्ट नहीं मिला कभी से. Legit बता. ऐसा हाँ. Stream Bhatura did yesterday. मेरा रोना हो गया आज का. Let me complete. Hello. सिर्फ बतूरा एक ही पर्सन है जिसने स्ट्रीम किया था and I was literally shocked कि finally किसी ने स्टेप अप किया और हमारे लिए स्ट्रीम किया. बतूरा we love you. 900 वाचिंग कुछ आ रहा था एक बार हमारे मैच पे. ब्रो माँ कसम खुद मेरा स्ट्रीम को उतना लोग देखते रहे गंदे लोग भाई. बतूरा ये ले मेरा हार्ट. नेल पेंट तो बहुत अच्छा है ना? हाँ ले ले. मैं वही दिखाने के लिए तेरे पास लाई हूँ. सोच रही थी कोई प्रोटेस्ट करेगा मुफिन ने कर दिया. ले लिया मैं. थैंक यू एक बात बोलूं तुझे. yesterday से बतूरे ने किया था. बतूरा सुन. Thank you Dawn, Akali and Deadzone and Jelly. A big thanks to Akali. बहुत अच्छा. इन चारों के बिना हम लोग कुछ भी नहीं है. ठीक है? Why do you say Jelly like in such a sarcastic tone? अरे तुमने हमारे लिए सब. Well done रे. They did amazing. मतलब क्या बनाते? They did amazing रे. ओ भाई बता भी नहीं क्या बनाती हूँ. क्या की भाई हेलो. अरे वो इंस्टाग्राम की पोस्ट वगैरह सब कुछ हमारे लिए मैनेज करती है. सब कुछ जेली हमारे लिए रात भर बना के रखती है कि ये चीज आपने ये थंबनेल लगाने है, ये पोस्ट कर रही हो, ये टैग करना है, ये करना है. डेड जोन मैनेज करता है सब कुछ. Eupho crying in the comments saying अपने को VP अच्छी नहीं ऐसा कुछ नहीं. She is a substitute. She is also a counselor. सबको समझाती है. Muffin supremacy लिखना है. मतलब सब क्योंकि तुम SUB बोलना चाहती हो कि SAB बोलना चाहती हो. सब और सब. सब कुछ. सब बस इतना ही. सब कुछ. तो सब तो ऐसे बोलो ना. सब और सब. ब्रेन लैग. सबवे. भूख लग रही है अब तो. हाँ भूख लग रही है. MVP हम लोग जो जीते हैं. बढ़िया है. Thanks for the membership यार. Welcome to Loopers. Thank you. Bye bye Zeno. Bye bye guys. Insane. 60 more to 3K. Bye bye guys. I'm gonna end the stream now. Bye guys. Have fun. Good night. Muffin Bye supremacy. Casper. Take care. Bye everyone. Bye bye. Supremacy कर दे. 2 1 करो यार. 1 2 3 सॉरी मैं भूल गई. एक मिनट वापस आ रही. नहीं 3 2 1 कर दिया. बड़ा एंड. नाइस रे. They did amazing. 6 o'clock मैच है हमारा और मैच स्टार्ट सकता. अभी प्री शो चल रहा होगा. चलो चलते हैं अब अपने मैच के लिए रेडी होते हैं फाइनल्स के लिए. लेट्स गेट रेडी. आई होप आपने नया वाला व्लॉग देखा ही होगा. विल रिकॉर्ड वन मोर टुडे. एंड कोच स्लॉट में कौन बैठा था? कोई नहीं है कोच स्लॉट में. स्ट्रीम तो मेरी बहन करेगी अभी. स्ट्रीम डाल रही है. चलो एनीवेज इंशाल्लाह कल प्ले. आई नो राइट. लोगों ने बहुत अच्छा किया. कोई तो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है अब जाके. आई होप इन लोग का लैन होता है. अनुज भाई के स्ट्रीम पे रात को मिलते हैं. चलो सबको विश कर दिया मैंने. ओके सो अभिनब्बा I'll say that like Asteria is a new team. We formed around 2 months ago. So we didn't have the time to play TEC, Sky Sports and to prepare for this tournament. Yes.
Like we practice daily, and if it जो लोग पूछ रहे थे ना कि ये लोग टेक और स्काई क्यों नहीं खेल रहे थे the इस वजह time, से। you know. So that's why we said we'll just focus on FSL, VCT to qualify for LAN, and that's what we did. We kept everything aside. Yeah, that's all. Hey Gautam, thank you for the 500 STJ Supremacy. Let's go. That ace by Muffin, I know, right? देखना है क्या वो ace? I'll show you. Wait. I can show that at भाई least. क्या ही एस लिया रे उसने। वो क्या है उसका नाम, मफिन थी ना, जेट खेल रही थी या मफिन खेल रही थी आई थिंक। कौन खेल रहा था भूल गया मैं भाई। हमारा कौन सा वाला मैच है इन लोगों का? BO5 हुआ ना आज लाइटलिटी के साथ। चलो पृथा, एवरीवन, सी यू गाइस। व्हाई आर दे सो हैप्पी? कोई टूर्नामेंट जीते क्या? दे हैव क्वालिफाइड फॉर VCT FSL एलीट लैन सिंगापुर में जो होगा। दे हैव अचीव्ड समथिंग इनसेन रे। Muffin was the one who is tell Anna to buy. Let's see what can be done. Anyways guys, चलो मैं निकलता हूँ। I'll get ready. Char. I'll go downstairs, be with my team. Guys, love you all. Tata. Oh, NCS music भी देना होता है। NCS म्यूजिक तब ना बनेंगे प्रोफेशनल स्ट्रीमर हम लोग। लेटेस्ट वाला चलेंगे वो भी। Oh my god. Ooh, yeah, let's go. चलो बाय बाय।